Since 2013, under his guidance, 31 students oblique scholars have represented Gondwana University Gadchiroli in the Science and Technology faculty at state level Avishkar competition. Then since COVID 2019, Dr. Kishor has uploaded more than 240 teaching ed videos for faculties, academics, research, and other utility videos on his YouTube channel. Then more than 2.78 lakh reviewers from 42 countries have watched his videos. Within a short period, he has achieved the status of YouTube Partner Program, that is YPP. He has authored 78 books, including 18 international publications, and with re-editions, this figure goes up to 127 books. Many of his books are used as textbooks and reference books in various courses and universities. He has published 120 papers in reputed journals, including Scopus, and in various national and international conferences with significant citations. As part of his social responsibility, Sir has donated blood 17 times and registered posthumous eye donation at a government medical hospital in Chandrapur. He has written 60 articles in the Hitawada newspaper, mostly on research topics to raise awareness about research among the readers. He has donated 531 unique books on computer science and motivational books to late Ramadevi Omkarnath Sharma Library. Okay. Then Sir has been awarded many awards, including prestigious ones like the Ideal Teacher Award 2012, Best Writer Award 2013 from RTM University Nagpur. He is also a holder of Indian Books of Record 2014 for writing the maximum books in computer science, and a recipient of Ideal Teacher Award 2016 from Gondwana University. And he distinguished HOD 2017 from Computer Society of India in Mumbai, as well as Shikshan Ratna 2019 from Zero Mile Nagpur. He also received the Best Faculty Development for Online Teaching during COVID-19. Okay. Enough, I think. Professor Dr. Srinivas Warkhedi, during his tenure as the Vice Chancellor of Gondwana University in Gadchiroli, sent him a letter of appreciation for his insightful draft and contributions to successful administration of the university's first online examination in 2020 due to COVID-19. Then, since 2012, under his guidance, more than 5,000 students and faculty members have received certificates from IIT Spoken Tutorials Mumbai, launched by MHRD, Government of India, in various courses like LaTeX, Front Accounting, PHP, Java, Python, etc. So far, the college has received a total of rupees 14 lakh and 87,000 for various activities under his convenorship or co-convenorship from organizations like NASSCOM and RRFL. During COVID in 2020, he trained management council members, senate members, and academic council members of Gondwana University, Gadchiroli, for the online voting system, the first of its kind in India for the online selection of a member in the panel for vice chancellor. So that was the short introduction of Sir. Now I will request Sir to take charge further. Okay. Thank you, sir.
Okay, so thank you very much, sir, for this detailed introduction. First of all, I'm very much thankful to my friend and course coordinator, Dr. Ramesh Manza, for inviting me in this particular refresher course on a topic called as ICT. So, with your permission, sir, I will start session. Yes, sir, start. Yes. Okay, thank you very much. So, I hope that my screen is visible to one and all. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, madam. Okay. So, good morning to one and all. In the today's sessions, we are going to discuss about integrating all teaching e-resources material into a website framework. Okay, so of course, we are going to discuss what is e-resources, then how one can create the website from the very scratch. Okay, so it means in the today's sessions, we are going to discuss the following points one by one. First of all, we will have one small quiz for all of you. Followed by, we will see what are the basic e-resources, what is exactly e-resources, and what are the various elements of the e-resources. Followed by, we will discuss what are the various mechanisms for sharing and publishing the e-resources that you might have with your student. And finally, we will see how to create the website and integrate the various e-resources in your website. So let us start with, first of all, a quiz. So it's my humble request to all of you to open a slido.com on your web browser. आपको क्या लिखना है वेब ब्राउजर पे? सिंपली slido.com लिखना है. Followed by, you need to type a code called as 1561135. 1561135. It means आपको इस तरह से यहाँ पे ब्राउजर में क्या लिखना है? slido.com. सिंपली slido.com. उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको कोड टाइप करना है 1561135. I hope all of you understood. If you are facing any issues, you can also scan this QR code and you can join this particular quiz. If you are facing any issues, you can also scan this QR code and join this particular quiz. So please, जल्द से जल्द. Since I want all of you to be present in this particular quiz. All of you, please join immediately. सर वो नंबर आप शेयर करेंगे क्या? प्लीज कोड शेयर कीजिए. देखिए यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. देखिए 1561135 आपके स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहा है. नहीं दिख रहा है सर, हमको नहीं दिख रहा है. स्क्रीन शेयर नहीं होती है? वो नंबर नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल. Okay, no issue. I will share. Don't worry. मुझे स्टॉप करना पड़ेगा. एक मिनट. someone of you, कोई भी आप में से फिर से नोट कर लीजिए मैडम. 1561135. Don't write your number, simply write your name. Sir, 156 1561135. Okay, 1561135. So for only 3 participants joined. Yes, welcome all of you. Archana, Amol, Dipti, Archana Sabre, Ram Kalyani, Anush, Akhil Verma ji, welcome. Let me once again repeat. इस QR कोड को स्कैन कीजिए और टाइप कीजिए 1561335. वेलकम कुणाल. सर ज्वाइन कर लूं? यस बिल्कुल. नाम आ रहा है. व्हाट इज? हाँ, बस वहां पे आपका नाम लिखना है. लिख लीजिए अपना नाम जो भी है. हाँ सर, ज्वाइन हो गए. ओके सर, गुड, थैंक यू. टोटल अभी 15 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए आउट ऑफ 30. सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर. यस मिस्टर, वेलकम मिस्टर अमीन अंसारी जी. वेलकम अमित सरकार जी. यस, ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली, लास्ट मिनट. Sir, I'm trying through my PC, personal computer. No issue, sir. Simply type slido.com on your web browser. Slido.com on your web browser. Yes. SLIDO.
slido.com on your web browser. Press enter key. You will get a box where you need to type a code 1561135. Welcome, Rupa. Sir, it is Santosh. Okay. Welcome, Mr. Santosh. Yes, you are there now. Very much. Yes, I'm expecting more. There are only 16 participants who joined this particular quiz. So I'm expecting some few more. Out of 30, at least 26 to 27. Please don't do anything something like Mr. 11. Welcome, Miss Pallavi. Welcome, Miss Sonali. Please, quickly. Okay, now we are going to start a quiz. देखिए, इसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक टाइम लिमिट रहेगा. विद इन दैट टाइम लिमिट ओनली यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, सो बी केयरफुल. And for each and every question, depending upon the level of the difficulty of the question, okay, it might be possible some question may have a less time compared to the others. Okay, so let us start. What are the three important aspects of the classroom? What are the three important aspects of the classroom? Only delivering the lecture and conducting the assessment, maintaining the attendance and delivering the lecture, or maintaining the attendance, delivering the lecture and conducting the assessment, or providing the note and maintaining the assessment. इसमें से कौन सा है? Only 14 people have given the answer. Okay. So correct answer is the third one, that is maintaining the attendance, delivering the lecture, and conducting the assessment. Good. Next. Good, Mr. Pradeep ji. You have solved this within the shortest time. Next question. Various electronic tools to access e-resources are. What are the various electronic tools to access the e-resources are? Computer, laptop, smartphone, tablet, e-readers, or all of the above? Mr. 11. Mr. 11. Who is Mr. 11? Be careful. Okay, that's good. All of you have given the correct answers. The various electronic tools to access the e-resources are what? Computer, laptop, as well as smartphone, tablet, and e-reader. Through all of them, we are able to access the e-resources. Good. Next question. A website can include images and video, hyperlinks, forms, or all of the above. A website can include. A website can include images, videos, hyperlink, forms, or all of the above. Good again. Okay. So it's all of the above. We will be able to include all these things in our website. One normal video of 40 to 50 minutes lecture consumes how much space according to you? In between 600 MB to 1 GB, in between 1 GB to 2 GB, or in between 2 GB to 3 GB, or in between 3 GB. Okay. So correct answer is in between 600 MB to 1 GB. I am saying normal video. Good going, Mr. Pradeep ji, Archana, Amol, all of you are following the correct way. Next, as of now, Google provides how much of GB free space memory to user? 15 KB, 15 MB, 15 GB, 15 TB. As of now, Google provides how much of GB free space memory to user? 15 GB, that's correct. देखिए ऊपर में ऑलरेडी GB लिखा था.
YouTube provides user how much free space of memory? 15 GB, 15 TB, unlimited 15 GB. YouTube provides user how much of free space memory? 15 GB, 15 TB, unlimited, or it's a 50 GB. It's a unlimited. Okay, remember, YouTube provides the unlimited free space of memory. Good going. Next, one can upload how many videos in YouTube channels? Unlimited, 50 videos per day, 100 videos per day, or 200 videos per day. One can upload how many videos in YouTube channel? It's unlimited. Okay, there is no limit that how many videos you can upload on a particular day. One can schedule when to publish a video in a social app. Where one can schedule to publish a videos on a social app in Instagram, Twitter, Facebook, or YouTube. In which one of these apps one is able to schedule when to publish a videos? It's a YouTube only. Okay. Next, Google Drive data can access. Google Drive data can access locally on the device, only on the device connected to the same network, from any device with the internet access, or only on the device where it is uploaded. Using Google Drive, one can access the data which is locally on the device or from any device with having internet access. Okay, the third one is the correct. From any device with the internet access, you will be able to access the data from the Google Drive. Next question. Mooc stands for Massive Open Online Courses, Massive Open Offline Courses, Massive Online Open Courses, Multiple Offline and Online Classes. Being a teacher, I hope that all of you are aware about the MOOCs. So it's a Massive Open Online Classes. Next, how many quadrants are mentioned in MOOCs? 3, 4, 5, 6. How many quadrants are there? The entire MOOC contents have been divided into how many quadrants? 3, 4, 5, 6. That the 4 is the correct answer. Okay, so congratulations to all of you for doing very well. Now, please rank the following features, e-resources, based on their importance to you in your educational or professional context. Okay, आपको रैंकिंग करना है इसको. Start. What is important for you? अगर आपके पास ई रिसोर्सेस है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? किसी के साथ शेयर करना है आपको स्पेशली, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? So almost all, everyone is saying user friendly interface रहना चाहिए. Okay, now there is a little bit change. Content variety is the most important. Your content, maybe it should be a text, or it may be images, or it may be videos, or it may be having certain interactive element. So everyone is giving the preference to the what? The content. Okay. Second one is saying that it should be user friendly so that everyone should be able to use it. Third one, security features रहना चाहिए, and no one is talking about the collaborative. No one is talking. It means you say it's a lit preference that has been given to the collaboration. Okay. Now, have you ever created a website using a Google site? How many of you have created the website using Google?
किसी को मालूम है या नहीं है? No, 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 no. Yes, okay, good. Okay, using WordPress. Okay, that's good. Okay, so now few of you have a certain little bit experience with the creating the website. That's good idea. And if you don't have, nothing to worry. Okay, we are going to see all these things. Now, question arises: what is ICT? As all of you are aware, it is nothing but information and communication technology. And on this, we are going to see a various teaching and learning methodology. So, what is ICT-based teaching learning method? It refers to the integration of ICT tools. Okay, what are the various ICT tools? As you are aware, MS Office is one of your ICT tools. Okay, then Paintbrush is again your ICT tool. So there are n number of tools are available for you, and e-resources. And e-resources, it means you are integrating both these, the tools and your resources. The resources may be in different format. We will see within a moment what are the different format. For what purpose? To make your learning experience more engaging, interactive, and effective. For that purpose, what we are doing, we are integrating these two concepts. First one is ICT tools, and second one is what? E-resources. Now, what do you mean by e-resources? E-resources means any resources which require devices like computer, mobile, tablet, or any electronic product to access the various material, any information that you will be able to access through a certain devices. Okay, that is nothing but what we are e-resources. And it must be stored in a electrical signals. Okay, usually in a computer, and that one is able to access through the internet. Now, what are the e-resources material? It may be a data. It may be a information representing certain numbers. It may be your text. Your data may be in the textual format. It may be in the form of images. It may be in the form of certain graphics or maps. May be a animated movies. Then it may be in the form of sound, that is music, videos, and finally your programs. Okay, your e-resources may be in a different format. So these are some of the common format that I have shown over here. Now, what are the various ICT-based teaching learning online tools? There are n number of tools are available for you. These are for learning management system, we have a Moodle, Canvas, Blackboard. For video conferencing platforms, we have a Zoom, okay, Microsoft Teams, Google Meet, and so on. For ICT-based teaching learning, we have various online tools are there. In the today's sessions, we are going to discuss about creation of website. Okay, again, for creating a website, we have various tools. Mr. Number 4, please. Mr. Number 4, please. Okay, GoDaddy website builder and Google site. So we are going to discuss today a Google site. Is it possible for you to refresh all these things, Mr. Number 4 and 11? Yes. तो थोड़ा ध्यान दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होंगे वहां पे, टेक्निकल पर्सन, मेक श्योर दैट. Okay, now from here onwards, we have some interactive. So let me know what are the three aspects of the classroom. Any one of you. What are the three important aspects of the classroom? हमने already quiz में discuss किए थे. Yes. Please unmute yourself and give the answer. Three important aspects of the classroom. Whenever you are entering into a classroom, what are the most three important aspects usually one have being a teacher? Being a teacher. Sir, can I? Yes. Sir, it's a teaching learning method that we are going to use. Okay. Assessment and the content part. That's good. Any other? Sir, it's management, classroom management. Okay. That is the only one thing? Managing the class? Classroom environment. Okay. Sir, the content of the subject, how you are going to be delivered. That's good.
Okay, let's see. Usually, I'm saying usually, okay? But the first thing that you are doing is what? You are taking the attendance. Okay? It may be in a different form, no issues. It may be the normal approach that you are following, or it may be a biometric, or it may be using Google Form, or it may be some other approach, no issues. The first thing usually one does is what? Taking the attendance. The next one is delivering the contents. Okay, that is the most important part. Being a teacher, the content delivery is the most important part. Now, whenever you are delivering the content may be what? Sharing the resources. You are sharing the resources with your student in the form of notes or in the form of books, or you might asking certain student to follow certain books or journal, or you may give a certain website link to follow newspaper cutting, etc. Okay, so in your delivery content, you may share some other resources apart from the what you are delivering in your class. Okay, and the final one is assessment of the student. How much he has learned. How much he has learned. It means that is what? Nothing but the assessment. So assessment may be maybe in the form of unit test or seminar or poster competitions or debate or etc. in a different way. Okay, so it may be a two-way assessment. The formative assessment to know how much someone has, how someone is learning, and second is how much he has learned. Okay, so there are two assessment techniques: the formative and summative. Now, during the COVID period, I hope that most of you have created the videos. Okay, so now my question to all of you here is, how much do you think? Okay, before that, what is the flipped classroom? Anyone, have you heard the word flipped classroom? Yeah, may I, sir? Yes, please. So flipped classroom, here first we give the material to the students to go through it, and then we have the discussion in the class. Okay, it means the students are following your material or your whatever the instruction that you have given. They are following, they are referring those books and notes, and then they are coming with a certain doubt. And being a teacher, you are clearing their doubt. That is what a flipped classroom. Okay. Yes. So nowadays we are moving towards a flipped classroom. Okay. So the madam has rightly said, what is that flipped classroom? Which increase the student engagement and learning. The basic motto is what? So that student should learn something himself. That is what the basic motto of the flipped classroom. So here students read the content at home and resolve all the doubts during the class time. That is what the flipped classroom, and nowadays everyone is moving toward the flipped classroom. So now question arises, how to engage your students? That is the most important part. Okay, so how you should engage your students? So method of engaging the students may be Google Classroom. Okay, second one is Kahoot. This is one more tool through which you will be able to engage your students. And finally, a website. Through website, one is able to engage your students. Okay, we will discuss all these things, especially about the website only. Now, let me know. During the COVID period, many of you have created the videos. So, in order to take a single classroom, how much 40 to 50 minutes, how much videos, how much space it consumes? I'm talking about normal videos. Okay. एक नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए कितना मेमोरी स्पेस लगेगा? We have seen in the quiz. 3 to 500 MB, sir. 3 to 5? 500 MB. MB. Only 3 to 5 MB. Okay. Yes. Any other? 600 MB to 1 GB. That's good. Okay, that was the option that has been given in our quiz. Okay, so almost it takes for a lecture of 40 to 50 minutes, it consumes in between 600 MB to 1 GB. Again, I'm saying it's a normal video. Okay, I'm not talking about the high quality videos. So question arises. Now let me know what kind of mechanism you have followed during the COVID in order to share your resources with your students. Yes, any one of you? What kind of mechanism? Hello? Google Classroom, sir. Google Classroom. Google Classroom. Google Classroom. Okay. So what you have done in Google Classroom? You have shared your videos, or what you have done exactly? You have Link uploaded. of the video we have given. Okay. So where you have kept your videos? अपने अपनी वीडियो It's कहाँ on the रखी? drive. कहाँ पे? Google Drive. Google Drive में. Okay, Google Drive में अपने अपने videos रखे थे. Okay, now let's see the drawback of all these approaches that you have followed one by one. So for sharing and publishing and announcing
the videos, we have a various ways. The first one is, of course, social media apps. Okay. Second one is your Google Drive. The third one is your YouTube, and the last one is your personal or college website. ओके इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ हम रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. दीज आर दी सम ऑफ दी वेज थ्रू विच वी विल बी एबल टू शेयर योर ई रिसोर्सेज विथ योर स्टूडेंट्स. So let us discuss all of them and let us try to see the advantages and disadvantages of all these four mechanisms. The first one, social media apps. As all of you are aware, WhatsApp is one of the most, what you can say, that the social app that has been followed by the many users, then Telegram, Instagram. Okay, through these, what you will be able to do, you will be able to share e-resources with your students. So most of us, we have followed what? WhatsApp during our COVID period only. राइट, एम आई राइट? कि अपने अपने जो भी वीडियोस बनाए अपने क्या किए, व्हाट्सएप के थ्रू अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किए. इज दैट क्लियर? किए हैं, नहीं किए? यस सर. ओके, यस सर. सो इट इज वेरी इजी टू शेयर. कुछ नहीं, हमने जो वीडियोस बनाए उसको प्लीज वेरी इजी टू शेयर. यस प्लीज सर. Yes, we shoot our videos at home and through YouTube we have launched them for our students. Okay, that is As per their time they used the videos. That's good. Okay, we are also coming to that part. Now we are simply discussing about the WhatsApp only. Okay. So what is the disadvantage? Over a period of time, out of memory. If you send say 10 to 15 videos of 40-minute class, अगर हम वीडियो अज्यूम करें कि एक वीडियो आपका 1 GB का है, एक वीडियो आपका 1 GB का है, इसका मतलब आपने 10 to 15 वीडियोस भी अगर अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किए, तो इसका मतलब 15 GB की इंफॉर्मेशन उसके व्हाट्सएप पे चली गई है. प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट. प्लीज म्यूट. मिस्टर पराग, प्लीज म्यूट. Okay, thank you. And organization of resources is not possible in on WhatsApp. Assume that there are two teachers teaching in a particular class, and both of them are sharing their e-resources or videos with your students. So it is not possible for a student to organize the content according to the teacher or according to the class. That is not possible through this social app. Okay, that is the basic drawback of what? A social media app. Then we have a Google Drive. Where, what is Google Drive? Where one is able to store, share, and access your files and folder from any mobile device or tablet or computer. Okay, that is the basic advantage of what? Google Drive. You will be able to access those data through any devices. Again, it is very easy to share. But what is the drawback again? It uses only 15 GB limit. It means on a single Gmail account, in a single Gmail account, you will be able to save a maximum 15 GB of information. फिर से हम अज्यूम करें कि अगर आपकी वीडियो अगर 1 GB की है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने वीडियोस आप अपने गूगल ड्राइव में रख पाएंगे? मैक्सिमम 15 वीडियोस ही रख पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं. ओके, तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ व्हाट? अगेन गूगल ड्राइव, बिकॉज ऑफ लिमिट ऑफ 15 GB. अगेन रिमेंबर 15 GB लिमिट इज फॉर व्हाट? सिंगल जीमेल अकाउंट. अगर आपके 2 जीमेल अकाउंट होंगे तो इसका मतलब 30 GB तक. 3 जीमेल होंगे तो आपके 40-45 GB तक का आप इंफॉर्मेशन वहां पे सेव कर पाएंगे. ओके, बट इट इज वेरी मच इजी टू share the information that you are storing on a Google Drive with your student. You need to simply create the link, okay, and share that link with your student. That is what he has to do. Now, the third one is what? YouTube. It's a free video sharing website and make it very easy to watch in an online mode. And you can create and upload as many as videos you like. There is no limit at how many videos you can upload. Advantage, no necessity to worry about the size. Okay, and the number of videos that you can upload. Like we have seen the drawback, your social apps on your YouTube, Google Drive. But in YouTube, you don't need to worry about the size. One can schedule when to publish a video. That is very much possible on YouTube. आपको कितने बजे, कितने दिन, कौन से समय में आपको वीडियोस बच्चों के साथ शेयर करना है, वो आप वहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो. And finally, what is the disadvantage? You can upload only the videos, not other types of materials. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ नोट शेयर करने हैं बच्चों के साथ या कुछ पेपर आर्टिकल शेयर करने हैं, तो दैट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल यूजिंग द यूट्यूब. यू विल बी एबल टू शेयर ओनली द वीडियोज. ओके, सो वी हैव सीन द ड्रॉबैक ऑफ ऑल द फ्री
That is what? First one is social app, second one is your Google Drive, and the third one is your YouTube. Now, what is the option for all of them? It's a true website. Very easy to share and distribute a different type of resources. Different types of resources. It may be a PDF, it may be video, it may be your handwritten, no issue. It is not necessary that you should be a master in a computer in order to share any kind of information with your student. You can also share your handwritten note with your student, no issue at all. You can create a separate pages according to the subject or according to teacher. That is, organization is very much easy when you are talking about the website. Can implement the concept of LMS, CMS, and virtual networks. Okay, virtual learning environment. That is through various tools. We will discuss all of them one by one. Okay, LMS means learning management system. There are course management system, and finally virtual learning environment. All this thing is very much possible using the website. So now, what you can include, or what are the things that you can integrate within the website? You can integrate the YouTube, or it means videos, images, PDF, and any one of the Google app. When you're talking about Google app, it may be a Google Drive, Google Form, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Map, or any other product of the Google. You will be able to integrate that within the website, including your instructional material, resources, which may be in the form of article, notes, videos, quiz form, or frequently asked question via Google site. It means you will be able to integrate all these things within your website. And what is the most important part is that whenever you are integrating all these things within a Google site, it can be customized automatically according to the different devices. It means you will be able to access your website through laptop, tablet, or mobile, and it will be customized accordingly, automatically. It means you don't need to write a separate code for whenever you are accessing those information through laptop or desktop or through your mobile or tablet, no issue. Okay, it will be customized automatically. So, yeah. So now we are going to see using Google site. Okay, how you will be able to access the information using the Google site, and what is the advantage of Google site? First one can create their site very easily using the Google site. Need only basic knowledge of drag and drop. You should have a knowledge of drag and drop. Drag और drop कैसे करते हैं उतना ही आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए. कंप्यूटर का कोई नॉलेज देना कोई जरूरी नहीं है. कंप्यूटर के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जिसके थ्रू हम बनाते हैं उसकी भी आपको नॉलेज देने की कोई जरूरत नहीं है. इट मीन्स यू डोंट नीड टू रिक्वायर एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. ओके, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डोमेन नेम, उसका नाम कैसे देना है, कैसे देना, कहाँ से खरीदना है, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है. गूगल हमको खुद ब खुद डोमेन नेम दे रहा है. हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हमको जो नाम चाहिए. देन उसको कैसे होस्ट करना है, मतलब कहाँ पे सेव करना है, वो भी हमको सोचने की जरूरत नहीं. गूगल इज प्रोवाइडिंग दैट पार्ट ऑल्सो. तो क्वेश्चन अराइज कि आपको क्या चाहिए गूगल साइट बनाने के लिए. You need only one thing, that is what? You must have your Gmail account. That is the only basic requirement. In order to create a website, you must have a Gmail account with you. Okay? यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. Thank you. Okay. Now, as per MHRD revised guideline, the structure of each Mooc, that is massive open online course, will have a following component, that is 4 quadrant. The first one is e-tutorial. अगर आपको कोई भी Mooc से रिलेटेड कोई कोर्स डिजाइन करना अपने स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए आपके पास 4 चीजें रहनी चाहिए. कि आपके पास कोई e-tutorial रहना चाहिए, मतलब जिसमें आप वीडियो बना रहे हो या फिर ऑडियो बना रहे हो जो आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो. देन कंटेंट जो आप बच्चों के साथ शेयर करें इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड लिंक्स या फिर कुछ नोट जो भी आपने गूगल ड्राइव में रखे होंगे वो शेयर करते आना चाहिए बच्चों के साथ. देन असेसमेंट का मैकेनिज्म उसमें रहना चाहिए कि जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सके. एंड फाइनली डिस्कशन फोरम रहना चाहिए जहां पे स्टूडेंट अपने कुछ डाउट पूछ सके और आप उसको you should be able to resolve those doubts. Okay, so whenever you are implementing all these 4 within a single any tool, then you are able to access or you are able to get a 5 mark under the career advancement scheme for each
व्हाट फॉर ईच मॉड्यूल। जो भी आप एक मॉड्यूल बना रहे होंगे जिसमें अगर ये चारों चीजें अगर कवर हो रही होंगी तो करियर एड ऑन स्कीम में आपको 5 मार्क मिलते हैं। ओके, तो ये हम कैसे मिला सकते हैं हम देखेंगे। यूजिंग वेबसाइट, बाय क्रिएटिंग द वेबसाइट वी विल बी एबल टू इंक्लूड ऑल दिस 4। ओके, so now I hope that you don't have any doubts and we will be able to move ahead by starting how to create the website. So let us start with the practical session. So like I said, you must have what? Your Gmail account. ये जरूरी है, आपका Gmail अकाउंट करना जरूरी है। Okay, then observe here you have a 9 dots. It is called Google Products, Google Apps. इसको Google ऐप भी बोलते हैं, Google Products। इसमें आपको Google के जितने भी प्रोडक्ट है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको गूगल के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्लासरूम, यूट्यूब, ट्रांसलेट वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे ऐप दिख रहे हैं। उसमें से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक ड्राइव। तो ये ड्राइव कहीं पे भी रह सकता है आपके। हो सकता है कि जब आप ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं या फिर कहीं टॉप में दिखे, कहीं पे भी। इट इज सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसको क्या बोलते हैं हम? ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो ये कहीं पे भी रह सकता है ये ऐप। तो इसके ऊपर सिंपली आपको डबल क्लिक करना है, दैट्स ऑल। जहां पे भी आपको कोई इश्यूज आए, प्लीज स्टॉप मी एट दैट मोमेंट ओनली, ओके, एंड आस्क मी। So this is what your Google Drive. This is your Google Drive. So what is Google Drive? Anyone of you? What is Google Drive? Anyone of you? It is What is? it is a space allotted for each email on the cloud, Okay. Any where you other? can store and The digital storage. Okay. files, where you can store Sir, the it's files. cloud storage, sir. It's cloud storage. So what is the advantage of cloud storage? You can access and it From will be any permanent. device. And you can access it Sir, anytime from access anywhere. from Any device. access from anywhere with internet Gmail. availability. That's all. Okay. Thank you. Yes. Okay. Kindly mute all of you. So Website बनवायला शिकवायला. kindly mute. Kindly mute. Okay. So it is the cloud storage where one is able to access the data from any location and through any devices. That is the basic advantage of what Google Drive compared to your normal storage. Like Windows Explorer में भी हम क्या करते हैं, वहां पे भी हमारे फाइल बनाते हैं. Okay, but that is what we are calling local drives. Okay, this is what your Google Drive, which you will be able to access from any devices from any location. So now observe that I have a certain files over here. Okay, files, and यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो फोल्डर्स मिल जाएंगे मुझे. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी लिंक बनानी है तो कैसे बनानी है? देखिए, इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ। इट इज वेरी इजी टू शेयर द फाइल, दिस पर्टिकुलर फाइल विद एनीवन। ओके, सिमिलरली अगर मुझे लिंक बनानी है तो हम लिंक कैसे बना सकते हैं? राइट क्लिक चेक करते हैं, लिंक बना सकते हैं क्या? कॉपी द लिंक। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट व्हाट लिंक। तो ये कैसे बनाना है? ये हम हमारे ये सब हमको लगेंगे जब हम हमारे कुछ फाइल्स अपलोड करेंगे यहाँ पे हमारे लोकल ड्राइव से। हम क्या करेंगे? गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कॉपी लिंक का एडवांटेज क्या है। नाउ यहाँ पे देखिए, होम स्क्रीन दिख रही है आपको, होम टैब। यहाँ पे क्लिक करेंगे या न्यू पे, यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? अलग अलग प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म एंड देन मोर। मोर के अंदर है यहाँ पे गूगल साइट। देख लीजिए कैसे आया फिर से एक बार। न्यू पे क्लिक करेंगे आप। न्यू पे क्लिक करने के बाद मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गूगल साइट्स के ऊपर। Is it possible to refresh that screen? Any one of you? Number 4, 5, number 4 and 11, क्योंकि इसकी वजह से पूरा ये हो रहा है स्क्रीन। Okay, no issue. Now, this is what your basic page है। हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं हम UGC HRDC। ओके, ऐसा हमने नाम लिखा है हमारे पेज का।
ना यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी हमारे पास ऑप्शन है, कलरफुल वगैरह जो भी करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और जब भी हमने कुछ किया है उसको अंडू करना है तो हम यहाँ पे अंडू कर सकते हैं। ओके, और रीडू करना है तो फिर से मतलब वापस लाना है तो वो भी कर सकते हैं। अंडूज एंड रीडूज बोथ आर अवेलेबल ओवर हियर। ओके, देन हमारे साइट को फिलहाल कोई नाम नहीं है तो वो भी मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ICT हमने नाम दे दिए। देन देखिए यहाँ पे हमने दो ऑप्शन देख लिया, अंडू एंड रीडू। देन इसके बाद प्रीव्यू है। देखिए मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मतलब जो मेरा वेबसाइट जो बनने जा रहा है वो लोगों को कैसे दिखेगा, यूजर को कैसे दिखेगा। तो आई एम सिंपली क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू। तो लेट अस सी, फॉर नॉर्मल यूजर, फॉर नॉर्मल लैपटॉप यूजर और डेस्कटॉप यूजर स्क्रीन ऐसे दिखेगी उसको। फॉर टैबलेट यूजर ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो रहा है, एंड सिमिलरली फॉर द मोबाइल यूजर सिंपली। ओके, it will customize automatically. You don't need to write any separate coding for that purpose. मैं प्रीव्यू को क्लोज कर रहा हूँ, एग्जिट प्रीव्यू। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। और ये प्रीव्यू हम बार बार करेंगे, जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे आपको प्रीव्यू दिखाएंगे। तो एक बार फिर से चेक करो प्रीव्यू कहाँ से आएगा। प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो कैसे दिख रहा है यूजर को, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यूजिंग प्रीव्यू। ओके, दिस इज फॉर द मोबाइल यूजर, फॉर टैबलेट यूजर एंड फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप यूजर। ओके, एंड एग्जिट द प्रीव्यू। Now, the first thing that you need to do is what? Selecting the theme for your website. Selecting the theme for your website. So for that purpose, select what? Theme from here. देखिए यहाँ पे तीन एलिमेंट दिख रहा है आपको, इंसर्ट, पेजेस एंड थीम। तो ये थीम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम्स मिलेंगे। वन इज सिंपल, एरोस्टेल, डिप्लोमेट, विजन, लेवल, जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी थीम आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए, नथिंग एल्स। Okay, if you want to change the color you can. So first thing that you need to do is what? Select what? The theme for your web pages. तो हमने यहाँ पे क्या किया, थीम लिए। The next thing here is a pages. Next thing is what? Pages. हमारे पास फिलहाल एक ही पेज है जिसको हम क्या बोलेंगे, होम पेज। So what is my home page? वेबसाइट खुलने के बाद जो पहला पेज ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली होम पेज। सो यू कैन ऐड एज मेनी एज पेजेस दैट यू वांट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक कीजिए, न्यू पेज का नाम आपको जो भी देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे स्टडी मटेरियल। ओके, मैं और एक पेज ऐड कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं सपोज सिलेबस। यहाँ पे आप इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए और इमोजीज, स्मॉल आइकॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ, इमेज। ओके, now once you have defined the order you can also change the order. For example मुझे लगा, देखिए यहाँ पे पहले कैसा आ रहा है, होम फिर स्टडी मटेरियल फिर सिलेबस आ रहा है। मुझे लगता है कि होम के बाद पहले सिलेबस आना चाहिए। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर? You can change the order of the page that is appearing on your website. अब मैं अगर प्रीव्यू करूंगा तो मैं कौन से पेज पे हूँ, सिलेबस पे, तो मुझे खाली सिलेबस में ही दिखाएगा वो बाय डिफॉल्ट। प्लीज रिमेंबर, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट उसी पेज को वो दिखाएगा। आप यहाँ पे बाद में क्लिक कर सकते हैं होम पे, सिलेबस पे। ओके, दैट इज नो इश्यू। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर, देखिए जब हम ओपन करें तो सबका जो बैकग्राउंड है वो सेम दिख रहा है। इट लुक्स लिटिल बिट ऑड। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑन होम पेज, होम पेज के ऊपर जब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूं तो यहाँ पे इमेज करके ऑप्शन मुझे दिखेगा। तो सिंपली क्लिक ऑन द इमेज। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, अपलोड एंड सिलेक्ट। अपलोड मतलब अगर आपके पास कोई खुद की इमेज कोई होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल ने ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमाइज इमेजेस दिए हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग हियर कस्टमाइज इमेज जो गूगल ने हमको दी है। तो बाय डिफॉल्ट गैलरीज के अंदर उसके इतने सारे इमेजेस हैं, तो आई एम सिलेक्टिंग से दिस वन एंड फाइनली क्लिक ऑन द सिलेक्ट। कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए एंड सिलेक्ट।
सी इट विल लुक लाइक दिस। सेकंड, सिमिलरली मैं सिलेबस का भी चेंज करना चाहता हूँ। सिलेबस का भी इमेज अगेन सिलेक्ट। नाउ दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग, मैं सर्च के दिस टाइम आई एम क्लिकिंग ऑन द सर्च। ओके, मुझे चाहिए सिलेबस से रिलेटेड कोई इमेज, तो देखते हैं कुछ सिलेबस से रिलेटेड कोई इमेज है क्या गूगल के पास। कोई प्रॉपर इमेज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेट्स टेक दिस वन। ओके, एंड फाइनली स्टडी मटेरियल। देखिए मैं फिर से क्या कर रहा हूं, मैंने दो मेथड बताया आपको। पहला क्या, गैलरी से लो, या फिर सेकंड क्या है, सर्च। अगर आपके गूगल ड्राइव में होगा तो आप गूगल ड्राइव में भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। ओके, द थर्ड वन, लिटिल इवेंट में स्क्रॉल कर रहा हूं, आई वांट अ प्लेन कलर। लेट्स सी दिस वन एंड सिलेक्ट। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट दिस। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो व्हाट वी आर डन, हमने कुछ नहीं किए, 3 पेजेस लिए हैं, उसका खाली बैकग्राउंड कलर चेंज किए हैं। ओके, एंड वी हैव गिवन अ नेम टू द पेज, दैट्स ऑल, दैट इज ओनली थिंग्स वी हैव डन। तो इस तरह से आपको जितने भी पेजेस चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पेजेस ले सकते हो। देखिए पेजेस लेने के लिए क्या करना है, पेज पे जाइए, पेज एलिमेंट पे, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, दैट्स ऑल। न्यू पेज, फिर से मैं ले रहा हूँ सपोज वीडियोस, डन, और एक पेज खुल गया। ओके, इसका भी आप बैकग्राउंड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज द कलर, सिलेक्ट। यहाँ पे देखिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट करके ऑप्शन आया था वीडियोस में, जो पहले नहीं आया था। एक बार फिर से चेक करो, क्या आ रहा है, अल्टरनेट टेक्स्ट। मतलब अगर वीडियो अगर मेरी डिलीट हो जाती है तो उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या, तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो लेते हैं हम सपोज वीडियोस के लिए मैं कोई ऐसी इमेज ले लेता हूं। ओके, नाउ फाइनली, नाउ कमिंग बैक टू होम अगेन। होम पेज पे आ रहे हैं हम। हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखी कि इसके ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए फिर से अगर मुझे लगा वीडियोस को सिलेबस के ऊपर चाहिए तो इसको सिंपली सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, और जहां पे चाहिए वहां पे जाके छोड़ दो। ओके, फिर से मैं उसको वापस अपनी जगह ला रहा हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, होम पेज पे तो हमने देखे, पेज देखे और हमने थीम देखे। नाउ इंसर्ट, इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे हम। इंसर्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, एम्बेड, ड्राइव, कंटेंट ब्लॉक, कोलैप्सिबल ग्रुप, टेबल ऑफ कंटेंट, इमेज कैरोसेल, बटन एंड सो ऑन। बस इन सब को हमको देखना है वन बाय वन। जितने भी ऑप्शन दिए वो सब हम कवर करेंगे विद इन द 2 सेशन, द करंट वन एंड द नेक्स्ट सेशन। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शन दिए वो सब हम ट्राई करेंगे। So let us start with a very simple one. First one, the text box. Okay, text box को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में क्या दे सकते हैं, कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, कोई भी एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्टर एस बी किशोर का प्रोफाइल में देना चाहता हूँ। डॉक्टर एस बी किशोर यहाँ पे आ गया, और सेकंड पेज पे फिर से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पूरा प्रोफाइल दूंगा। तो प्रोफाइल देने के लिए मुझे पहले कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स मूव हमारे वर्ड फाइल में जहां पे मेरी इंफॉर्मेशन सेव है। और आप मुझे बताइए कि अभी जो मैंने किया है वो इज इट गुड और रॉन्ग, जब भी मैं करने जा रहा हूं एक्चुअली। शॉर्ट प्रोफाइल, ओके, जो मेरा प्रोफाइल मॉर्निंग सेशन में पढ़ा गया था वही मैं वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, लेट्स सी, हम प्रीव्यू करके देखेंगे कि ये कैसे दिख रहा है हमको। जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रीव्यू कब देखना है, जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं आप देख सकते हो कि आपने जो किया है वो कैसे दिखने वाला है। तो नाउ मुझे बताइए कि आपका ये जो वेब पेज है, होम पेज है, यहाँ पे हेडिंग दिया है और इसके बाद इतनी बड़ी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो डू यू थिंक इट लुक्स गुड? यस, No, sir. नो, ओके, थैंक यू। So what is the solution for this? The solution for this is
नाउ नेक्स्ट थिंग, आप जो भी आपने एलिमेंट ऐड किए हैं उनको आप कभी भी डिलीट कर सकते हो। सिंपली सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है आपके। आप ओके, अगर आपको कॉपी करना है उसका तो आप कॉपी कर सकते हो, मतलब सेम इंफॉर्मेशन कहीं और लेके चाहिए, उसमें हल्के फुल्के चेंजेस करने हो तो उसके लिए आप कॉपी कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ कलर चेंज करना है तो कलर भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। लेट चेक हाउ इट लुक्स। ओके, इस तरह से हम कलरफुल भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम डिलीटिंग इट। ओके, सो आई होप दैट आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आए। कॉपी कर सकते हो जो भी चाहिए आपको, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए, और उसको कस्टमाइज करना है, कलरफुल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। So I'm simply deleting it. Now, so what is the solution for this? The solution for this is, again, I don't want this. So again, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। So what is the solution for this? We have a called collapsible group. Collapsible group. देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन आ गए collapsible group में। तो सेकंड सेक्शन में मैं पूरा पेस्ट कर रहा हूँ जो भी मैंने अभी कॉपी किया था। ओके, और फर्स्ट सेक्शन में मैं लिख रहा हूँ नाम। नाउ लेट्स प्रीव्यू इट। कोलैप्सिबल ग्रुप के अंदर में ओके, सेम इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे अपने आप क्या आया है, डाउन एरो किया है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक्सपांड हो जाएगा। ओके, और मिनिमाइज, मतलब कम जगह। इफ समवन इज इंटरेस्टेड ही विल रीड इट, इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड व्हाई टू मेक इट हिम रीड, मतलब उसका जगह क्यों ऑक्युपाई करे। दैट इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो एडवांटेज ऑफ कोलैप्सिबल ग्रुप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। whenever you have a large text of data that you would like to discuss with your student, you can, मतलब हम ऐसा भी कर सकते थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अंदर में नंबर नोट दे दिए हमने, फिर से उसी का कॉपी के चैप्टर 2 उसके अंदर के जो भी नोट देने हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, yes, sir. मतलब हम यहाँ पे चैप्टर 1 लिखेंगे और चैप्टर यहाँ पे जो सेक्शन है नीचे वाला सेक्शन, वहां पे हमको जो भी उसके रिलेटेड मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो हम वहां पे दे सकते हैं। अब मैं इसी को देखिए कॉपी कर रहा हूँ, फिर से कॉपी डुप्लीकेट, और यहाँ पे सपोज तो अगर ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे 5 फैकल्टीज है और 5 फैकल्टीज की मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम डॉक्टर मानसा सर की मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अजूम करते कि डॉक्टर मानसा सर की इन्फॉर्मेशन है। ओके, इसका मतलब होम पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, व्हाट यू कैन विजुअलाइज, दैट इज अप टू यू एंटायरली। Okay, it means you can also keep the information of all the faculty members that you have. If you are creating some departmental website, you can something have like this. If you are creating the college website, you may start with the management and then principals and all other subordinates. Okay, in that way you can also create. So my aim here is what to let you know how this collapsible group works. So I hope that that part is clear. आप लोगों को समझ में आ गया हो कि collapsible group कैसे काम करता है। Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now moving towards the next, we have a second page, that is what syllabus. In the syllabus, there are again a number of methods. The one is image. देखिए यहाँ पे image option है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में। हम ये सब कहाँ पे कर रहे हैं, फिर से याद रखिए, ये सब हम इंसर्ट ऑप्शन के अंदर में कर रहे हैं। इंसर्ट के अंदर में इमेजेस में जा रहा हूँ, इमेजेस में मैं बोल रहा हूँ अपलोड, इमेजेस में बोल रहा हूँ अपलोड। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास सिलेबस की एक इमेज फाइल बन के तैयार है। आई एम अज्यूमिंग कि ऑल दिस आर अवेलेबल विथ यू। तो हम जा रहे हैं सिलेबस। तो पेपर 1 आपका जो भी पेपर पढ़ा रहे होंगे उसका सिलेबस आपके पास इमेज फॉर्मेट में अवेलेबल। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ, आप इसको एनलार्ज कर सकते हो, नो इश्यू। सिमिलरली आप सेकंड, जो अगर आप अज्यूम करके अगर आप 2 पेपर पढ़ा रहे होंगे तो आप अपने दोनों पेपर वहां पे अपलोड करके रख सकते हो। तो देखिए बाय डिफॉल्ट कैसे दिखता है वो, एक के नीचे एक के नीचे एक दिखेगा। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ओके, तो दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। देखिए मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ एक बार फिर से।
सिलेबस आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टूडेंट को अगर इसको डाउनलोड करना है तो क्या करेगा? इज इट पॉसिबल? स्टूडेंट को लगता है कि इसको डाउनलोड करना है, तो इज इट पॉसिबल? No way, because there is no mechanism that has been given over here. Okay, so what you can do, what you can do. So we have seen image is not a solution for this work. Okay, image कहाँ पे काम में आएगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम फिर से वापस जा रहे हैं होम पेज पे। मुझे लगा कि यहाँ पे इमेज भी देना है, उनकी फोटो के साथ देनी है, तो इमेज में दे रहे हम डॉक्टर एस बी किशोर, अपलोड इमेज। सपोज जो भी पिक्चर होंगी, ओके, इज इट ओके? मतलब इस तरह से हमने कुछ इमेज दिए और इसको रखे हमने डॉक्टर एस बी किशोर के पास में, ड्रैग एंड ड्रॉप बाजू में। काफी बड़ी हो गई इमेज। अंडू करता हूँ, अंडू। ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा इधर आ जाए साइड में, तो यहाँ पे जगह बन गई है। अब मैं वहां पे फोटो को लेके जाता हूँ। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी जगह आप क्या यूज कर सकते हो? इमेजेस का यूज कर सकते हो, बट नॉट फॉर सच काइंड ऑफ वर्क। मतलब आप अपना सिलेबस को आप अपलोड कर रहे हो और उसको आप क्या दे रहे हो? इमेज फॉर्मेट में दे रहे हो। इट डजंट लुक गुड, क्योंकि स्टूडेंट क्या चाहता है कि आपने जो सिलेबस अपलोड किए है, मतलब अपने वेबसाइट पे रखे है, उसको वो डाउनलोड कर पाया है। ओके, लेकिन इस मेथड में हमको वो सब मिल नहीं रहा है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? तो सॉल्यूशन फॉर दिस इज व्हाट? ऑलवेज रिमेंबर अ बटन। हम क्या सिलेक्ट करेंगे? जब भी आपको लगता है कि अपने स्टूडेंट आपके कुछ मटेरियल को डाउनलोड करने की मैकेनिज्म आपको देने का होगा, तो आप हमेशा क्या सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे बटन मेथड। रिमेंबर दिस। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे बटन। बटन का नाम क्या Okay. ले रहे? हेलो, ओके। तो मैं बटन का नाम दे रहा हूं सपोज पेपर 1 PLT। और तुम करते हैं जैसे कोई पेपर का नाम है। अब मुझे यहाँ पे क्या देना? लिंक देना है। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है? लिंक देना है। तो ये लिंक कहाँ की रहेंगी? मेरी गूगल ड्राइव की। लिंक कहाँ से रहेंगी? मेरी गूगल ड्राइव की। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि ये जो मेरा पेपर है यहाँ पे, जो मेरे लोकल ड्राइव में है, लोकल ड्राइव में है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उसको गूगल ड्राइव में लाना पड़ेगा। एम आई राइट? यस, नो? यस सर। यस, गुड। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे है वो सिलेबस। सिलेबस से रिलेटेड पेपर 1 के नोट्स, ये वाली पीडीएफ फाइल। ये पीडीएफ फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा गूगल ड्राइव में। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। गूगल ड्राइव में आए हम। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है प्लस फाइल अपलोड। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? फाइल अपलोड। तो मैं फाइल अपलोड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ गूगल ड्राइव में। प्लीज रिमेंबर, गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड बोल रहा हूँ। तो अपलोड का मतलब क्या हो गया? कि मेरे लोकल ड्राइव में जो भी फाइल है वो कहाँ पे आने वाली थी? गूगल ड्राइव में आने वाली है। लोकल ड्राइव वाली जो भी फाइल होंगी। सिलेबस, सिलेबस से रिलेटेड ये दोनों फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन बोल रहा हूँ, बोथ द फाइल्स। तो देखिए दोनों फाइल अपलोड है, ऑलरेडी है। वहां पे रिप्लेस करना है क्या? यस, अपलोड कर दो, कोई इशू नहीं, मतलब रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे आप रिसेंट पे क्लिक करके देख सकते हो, ये दोनों आ गए। अब देखिए पेपर 1 का PLT, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड टेक्निक। यहाँ पे देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉपी लिंक। फाइल को सिलेक्ट करना है गूगल ड्राइव में, राइट क्लिक करना है, वहां पे शेयर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड देन कॉपी लिंक। कॉपी लिंक पे क्लिक करें। करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर ये पार्ट? फिर से एक बार देखते हैं हम क्या किया हमने। ये बटन यहाँ पे आ गया हमारा। फिर से मैं एक बार लेता हूँ बटन का। बटन पेपर 2 का मैं नाम देता हूँ
पेपर 2 सपोज अज्यूम करें पेपर 2 का नाम प्रोग्रामिंग सी है, प्रोग्रामिंग सी। मुझे फिर से क्या करना पड़ेगी, यहाँ पे लिंक देनी पड़ेगी। तो लिंक कहाँ से दूंगा मैं, पेपर 2, राइट क्लिक, शेयर एंड देन कॉपी लिंक। ओके, कॉपी लिंक की हमने यहाँ पे, देन आईसीटी लाइट बंद करिए रे। पेस्ट। ओके, देन अगेन इंसर्ट। देखिए सेकंड बटन आ गया यहाँ पे। आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ सी द व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। मैं फिर से प्रीव्यू कर रहा हूँ, प्रीव्यू कर रहे हैं और चेक करते हैं कैसे आ रहा है ये। देखिए मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा पेपर 1 पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक न्यू टैग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये सिलेबस आपका अपलोड हो रहा है, और चाहे तो स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, या फिर चाहे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रिंट आउट ले सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। ओके, वी वुड लाइक टू गिव अ स्टूडेंट अ चांस टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जब आपको लगता होगा कि स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने की परमिशन देनी है, तो आपने हमेशा क्या सिलेक्ट करना है, बटन मेथड से करना है, नॉट इमेजेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द एडवांटेज विद द बटन? With button, it is possible for the student to download Yes. the information, e-resources. Similarly, he is able to take the printout of that e-resources. Please consider it as a e-resources only. Okay. So I hope that you understood the advantages of the button. Is that clear to all of you? Yes. यस सर। Yes, sir. सर अगर बटन पे ही हम सिर्फ लिख दें कि सिलेबस पेपर 1 और सिलेबस का टॉपिक लिख दें, तो खाली बटन से ही काम चलेगा क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल, नाम देके खाली आपको लिंक देना है। देखिए लिंक इज इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे लिंक कहाँ से दे रहे हैं हम, वहां पे उसको गूगल ड्राइव में जो भी है वहां से दे रहे हैं हम। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। नाउ द थर्ड पार्ट इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल भी यही मेथड से हम दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल को भी हम यही मेथड से दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी मेथड बताने जा रहा हूँ। अब अज्यूम करते हैं कि मुझे यहाँ पे बुक कवर दिखाना है। प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ प्लीज। मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, स्टडी मटेरियल की जगह हम यहाँ पे कभी भी चेंज कर सकते हैं नाम, कोई इशू नहीं है। डबल क्लिक कर दो, खत्म, बुक्स। मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्टूडेंट को मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बुक का कवर पेज उसको मालूम रहे। तब अज्यूम करते हैं, ओके, आई वुड लाइक टू शो द कवर पेज ऑफ माई द बुक जिसमें से भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली है, बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे भी मुझे बुक करना पड़ेगा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड है हमारे पास ऑलरेडी मालूम, हमारे पास क्या है, इमेज मेथड है। एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, सिंपली हम इमेज पे जाएंगे और बुक का कवर पेज है वो वहां पे दिखाएंगे। दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बुक के साथ साथ मुझे ऑथर की इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, ऑथर की इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। सो दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, इमेज इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। देन वी हैव व्हाट, अ कंटेंट ब्लॉक। कंटेंट ब्लॉक का यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप एक पेज, एक ही बुक है या दो पेज, दो बुक है, या फिर आपके पास तीन बुक है लेकिन आप ऐसे दिखाना चाहते हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज चॉइस इज यू। ओके, आप इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे चार दिया तो चार ही दिख सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको लगा पिक ऐड करना है तो आप पिक भी वहां पे ऐड कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके, यू कैन ऐड एज मेनी एज। तो आई एम सिलेक्टिंग फॉर अ टाइम बिंग, आई एम सिलेक्टिंग ओनली 2 बुक्स। ओके, यहाँ पे अपने आप आ गया। अब यहाँ पे प्लस सिंबल आ गया। प्लस सिंबल पे आने के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ बुक्स, पहला बुक्स जो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो प्रॉपरली दिखाने के लिए। सिमिलरली सेकंड बुक, प्लस पे क्लिक कीजिए, अपलोड सेकंड बुक। ओके, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। आप यहाँ पे चाहे तो ऑथर की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर पब्लिकेशन का नाम दे सकते हो, टाटा मैग्रेहुल। ओके, देन ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन,
एंड सो ऑन। इसका मतलब जब भी आपको लगा कि इमेज के साथ साथ अगर आपको कुछ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दिखाने का होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हो। देखिए एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर और एक सब हेडिंग आ रही है, वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे सपोज आप ISBN नंबर दे सकते हो, बुक का जो भी होगा, ओके। या फिर जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी उस बुक के बारे में आपको देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट दैट यू फील, okay. So whenever you like to display certain information along with the image, whenever you like to share certain information along with the image, then always go with what? A content block. Is that clear to all of you? यस सर। Good. Let's see preview. Preview देख सकते हैं आप कभी भी, कैसे दिख रहा है ये? ओके आप ये देख सकते हो कि टैबलेट यूजर को कैसे दिखने वाला है ये। देखो टैबलेट यूजर के लिए जगह कम है तो एक ही बुक दिखा रहा है एट टाइम, ऑटोमेटिकली वो सेकंड बुक नीचे आ गई। मोबाइल यूजर को ओके देखिए हमारे पास ऑप्शन कहां से दिखेंगे, सब ऑप्शन यहाँ पे वर्टिकल बार दिख रहे हैं हमको, यहाँ से क्लिक करो तो बाकी के सब ऑप्शन हमको दिखेंगे, होम पेज, सिलेबस, बुक, वीडियोस, इस तरह से हम जाएंगे यहाँ पे। ओके तो ऑल दिस प्रीव्यूज आर अवेलेबल। प्लीज रिमेंबर अभी तक हमने वेबसाइट पब्लिश नहीं की है, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, ये हम देखेंगे कैसे करते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर से एक बार मैं पराग सर म्यूट योरसेल्फ। सर मेरा एक डाउट था थोड़ा सा सर। यस प्लीज, यहाँ तक अभी हाँ जितना कवर किया उसमें। हाँ जी सर, इसमें सर मान लीजिए हम लोग इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होगी ना सर? वो गूगल ड्राइव वाली ही लिमिट है या इसकी अलग से मिलती है? गूगल ड्राइव की मेमोरी लिमिट सर, है, स्पेस। गूगल अच्छा ड्राइव की लिमिट है, मतलब गूगल जीमेल का जितना जी है सर। उतना ही रहेगा। क्लियर? जी सर, लेकिन थैंक हम देखिए हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वेबसाइट में हम खाली लिंक दे रहे हैं सर, प्लीज हम कहीं पे भी अपलोड नहीं कर रहे हैं। जी हमको सर। करना क्या है, मैक्सिमम लिंक यूज करना है वेबसाइट बनाते समय। थैंक यू सर। ओके नाउ हम फिर से हम जा रहे हैं पेजेस में और यहाँ पे हम फिर से एक ऐड कर रहे हैं न्यू स्टडी मटेरियल। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम तो कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है, तो हम हमारे हैंड रिटन नोट स्टूडेंट के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? ओके दैट इज ऑब्वियसली नॉर्मल क्वेश्चन दैट एक नॉन कंप्यूटर नॉलेज वाले या ऐसा बोल सकते हैं कि जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है या फिर जिनको MS वर्ड में टाइप करना वगैरह पॉसिबल नहीं, उसको PDF कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना उनको मालूम है। ओके फोटोज कैसे लेते हैं और वो हमको बच्चों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे, हम फिर से इमेज लेंगे। इमेज में हम क्या बोल रहे हैं, अपलोड। स्टडी मटेरियल, आपकी लैंग्वेज कोई भी रहो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या है, खाली डिजिटल वर्जन है, बाकी कुछ नहीं है। आपने खाली इमेज कन्वर्ट की है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऊपर में इंग्लिश में है, यहाँ पे नीचे में हिंदी में लिखा हुआ है। ओके टेक वन मोर एग्जाम्पल, अपलोड, इन दिस केस इंग्लिश मराठी कॉम्बिनेशन। बाय डिफॉल्ट नीचे में आएगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सॉरी अंडू कर लेते हैं हम, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके नाउ ऑब्जर्व दैट इट इज इंग्लिश एंड इन मराठी। नॉट ओनली दैट, ये हो गया हमारे हैंड रिटन नोट। कोई जरूरी नहीं हैंड रिटन हो, कोई बुक का भी हो सकता है इंफॉर्मेशन, कि हमने एक बुक है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली बुक को ही क्या कर रहा हूँ, वहां पे स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। बट प्लीज रिमेंबर, बी केयरफुल अबाउट द प्लेगरिज्म। ओके साइटेशन देना भूलो मत, यहाँ पे साइटेशन देना भूलो मत कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी की, क्या की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, अपने स्टूडेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। योर हैंड रिटन नोट, डोंट वरी एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल देखिए इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश मराठी, देन इट्स अ प्लेन, हम अंडरलाइन करके रख रहे हैं, उसके बाद हमने फोटोज निकाल ली है जो जो हमको लगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। Okay, so we have done something like this, and then we are sharing with our student. Again, it is a form of e-resource only. So basically, what kind of e-resources it is? It is nothing but the image format resource. It is nothing but the image format resource. Okay.
So in this way, you are also able to share such kind of information with your students. Is that clear to all of you? Yes. Yes. Okay. Now, moving toward next. The next part is here video. Next part is video. Before that, हम फिर से होम पेज पे आ रहे हैं। एक छोटी छोटी चीज हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये दोनों के बीच में क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एक डिवाइडर है। सिंपल, मतलब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। डिवाइडर, ओके, दोनों के बीच में आ गया डिवाइडर। बाद में स्पेसिंग है, दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग आनी चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता हो तो सिंपली क्लिक ऑन स्पेसर, नथिंग एल्स, थोड़ा प्रॉपर स्पेस आ जाएगा। मतलब जितने भी हमने इंफॉर्मेशन दिखा उसके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेसिंग प्रॉपर लिया है, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्पेसर पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट। फिर से एक पेज लेंगे हम। वीडियो बनाने के पहले हम और एक पेज ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओके। देखिए हमको करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल। टेबल ऑफ कंटेंट में हमने ऑलरेडी देखे थे, आपको याद होगा कि हमने होम पे कोलैप्सिबल ग्रुप लिए थे, कोलैप्सिबल ग्रुप लिए थे। ओके, ऐसा ही मैं कुछ करने जा रहा हूं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में भी। इंसर्ट कोलैप्सिबल ग्रुप, फॉर एग्जांपल पहला नाम दे दिया मैंने चैप्टर 1। चैप्टर 1 का डिटेल जो भी होगा मैं यहाँ पे लिखते बैठा हूँ, डिटेल्स ऑफ चैप्टर 1। जो भी होगा इंफॉर्मेशन, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होंगे हम यहाँ पे लिखते बैठ रहे हैं। सिमिलरली और एक चैप्टर में ऐड कर रहा हूँ कोलैप्सिबल ग्रुप के थ्रू, चैप्टर 2, डिटेल्स ऑफ चैप्टर 2 एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी होंगे हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और फाइनली हम बोलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, तो अपने आप क्या जाएगा, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। देखिए मैं फिर एक बार अंडू कर रहा हूँ। इस तरह से आपके जितने भी चैप्टर है बनाते चलिए, और लास्ट में आपको सिंपली क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। तो व्हाट इज द एडवांटेज यहाँ पे, जब हम प्रीव्यू करें, प्लीज रिमेंबर एक ऑप्शन यहाँ पे, जब तक ये पब्लिश नहीं होगा तब तक ये एक्टिव नहीं होते। प्लीज रिमेंबर दैट इज ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस। प्रीव्यू मोड में आप इसको क्लिक करके, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे चैप्टर 1 पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली चैप्टर 1 पे चले जाएगा। जैसे मैं चैप्टर 2 पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली चैप्टर 2 के कंटेंट में चला जाएगा। लेकिन ये प्रीव्यू मोड में आपको ऑप्शन एक्टिव नहीं होता है। ये कब होगा, जब आपका वेबसाइट पब्लिश होगा उस समय। तो जब पब्लिश हो जाएगा मैं उस समय आपको बताऊंगा कि ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे वर्क कर रहा है। फिलहाल ये कैसे ऑटोमेटिकली बन रहा है, ये क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। ओके गुड, थैंक यू। फाइनली वीडियोस के बारे में हम बात करेंगे। सर एक्सक्यूज मी, यस मैडम प्लीज। वो जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने लिखा वो कोलैप्सिबल ग्रुप से ही लिखा ना? हाँ ऑब्वियसली मैडम। हाँ, यस, थैंक यू सर। एक बार देख लीजिए फिर से आप। देखिए चैप्टर 1, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में उसके पार्ट में पूरा डिटेल में आप क्या कर Yes. सकते हैं, चैप्टर 2 लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर से Yes. एक बार ऐड कर रहा हूँ। देखिए अभी ये ऑटोमेटिकली कैसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ये भी देख लिया। गुड, ओके, आपने पूछा है तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, कोलैप्सिबल ग्रुप बोल रहा हूँ, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, चैप्टर सपोज 2 इसको दे रहा हूँ, और इसको नाम है चैप्टर 3 दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये अपने आप क्या हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट भी अपने आप कस्टमाइज हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली वो ये कर रहा है, रीअरेंज। जैसे जैसे आप चैप्टर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप ये बढ़ जाएगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि चैप्टर 1 ही नाम रहना चाहिए, आप जो भी नाम दे दोगे चैप्टर का वो आप यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया सपोज ABC, तो वहां पे ABC आ जाएगा ऊपर में, दैट्स ऑल। क्लियर? यस सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इज नाउ हियर वीडियो। तो वीडियो करने के यहाँ पे 3 मेथड है आपके पास वीडियो, जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। तो पहला अपन नॉर्मल देखेंगे, यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको अपने बच्चों के साथ शेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वीडियो मेरा पेज है। तो बाय डिफॉल्ट आपको बोल रहा है कि वीडियो सर्च करो,
या अगर आपकी खुद की वीडियो चैनल होंगी, प्लीज रिमेंबर, खुद की वीडियो चैनल होंगी तो आप अपलोडेड पे क्लिक करोगे। खुद की वीडियो चैनल होंगी तो आपकी जितने भी वीडियोस होंगे वो सब यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। अगर आपकी खुद की वीडियो नहीं होंगी तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो फिलहाल मैं दोनों मेथड बताता हूँ। अगर खुद की वीडियो अपलोड यूट्यूब चैनल होगा तो क्या करना है, अपलोड, जो भी आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, आप इसको एनलार्ज कर सकते हो, मतलब कोई इशू नहीं है, एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज व्हेन, जब अगर आपका खुद का कोई वीडियो होगा तो फिर से एक बार देख लो कैसे किया हमने। यूट्यूब पे गए, अपलोडेड में गए, आपकी जो भी वीडियोस होंगी, फॉर एग्जांपल फिर से आप इसको रीअरेंज कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके, एंड प्रीव्यू चेक कर लो एक बार कैसे दिख रहा है। तो ऐसे आपको जितने भी वीडियोस अपलोड करने हैं वहां पे कर सकते हो अपने इसमें। ओके, सो इन दिस वे व्हाट यू कैन डू, यू कैन अपलोड द ऑल योर अपलोड, मतलब आपकी वीडियोस होंगे तो। अदरवाइज अगर आपका नहीं होगा तो फिर क्या करना है हमको, यूट्यूब पे फिर से हम गए, यहाँ पे वीडियो सर्च में हम बोल रहे हैं कि सपोज ई कंटेंट या फिर आईसीटी रिलेटेड टूल्स का कोई भी एक वीडियो हमको चाहिए। आईसीटी लिख दिया हमने, जो भी हमको सर्च करना है, टॉपिक सर्च किए, एंड देन सपोज जो भी होगा, ICT did what his private, what is ICT? Okay, select this one. Okay, but now don't forget to give again citation over here. Okay, टेक्स्ट बॉक्स ले लियो और टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे citation दे दो आप। ओके, क्योंकि आप अपने वेबसाइट पे किसी और की वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तब भूलना मत कि आपको citation देना है। citation कैसे देंगे हम, सिंपली टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे यहाँ पे, और उनका जो भी उनके बारे में जो भी है, जहां से हमने कॉपी पेस्ट की थी वो सब, उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देके आप उसको citation दे देंगे। ओके, दैट इज द वे। तो फिर से एक बार चेक कर लो। Okay, so in this way you will be able to what upload the videos of your own or someone else, no issue. But do you think अगर आपके 50 वीडियोस है या 100 वीडियोस होंगे तो इस तरह से दिखाना, do you think it's a good way? No, sir. No. Okay, then question arises, what is the solution for this? What is a solution for this? So May I tell you, sir? We can have the Mr. Parag, Mr. Parag. we can save the video in the Google Drive and give its link here, like Okay, that's the good. text. That's good. Okay, it means you need to give the text form में आप इतने सारे लिंक देते बैठेंगे। I will give another way. Okay,
As all of you are aware about the Excel file, Excel मालूम है सभी को? Excel यस सभी ने सर। सुना है? ओके गुड। तो मैं देखो यहाँ पे Excel ओपन कर रहा हूँ। Excel, तो जैसे सर ने जो कहा था वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। Within a 5 minutes we'll take a break, no issue. I know that 12:30 का आपका ब्रेक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो लिंक नाम की फाइल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको सिंपली, जो हमने ऑलरेडी बनाई है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमको क्या करना है, आपका जो भी टॉपिक है वो लिख के रख दीजिए और उसकी जो भी लिंक होंगे उसको पेस्ट कीजिए। टॉपिक एंड देन लिंक उसकी। ये कहाँ पे, ये सब आपके गूगल ड्राइव में। हम अज्यूम करें कि ये गूगल ड्राइव में भी हो सकता है, फिर ये आपका यूट्यूब भी हो सकता है। नो इश्यू एट ऑल, प्लीज रिमेंबर ये लिंक जो आप दे रहे हो, इट मे बी फ्रॉम योर गूगल ड्राइव और इट मे बी फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, नो इश्यू एट ऑल। ओके, तो लाइक दिस वे आपके जितने भी टॉपिक है टॉपिक के नाम लिख लीजिए एंड फाइनली यहाँ पे देते चलिए। ओके, फिलहाल यहाँ पे ये जो यूजीसी दिया है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को जो आपने एक्सेल फाइल बनाई है इसको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा गूगल ड्राइव में। तो ओके, चेक कर लेते हैं ये फिलहाल सेव कहाँ पे, ये भी चेक कर लेते हैं हम। फिलहाल ये सेव कहीं और है, मैं इसको सेव एज करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब फिर से हम जाएंगे गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, और यहाँ पे बोलेंगे फाइल को अपलोड करो। जो डेस्कटॉप में है वो, डेस्कटॉप में फाइल नाम है वीडियो लिंक्स, वीडियो लिंक्स। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी हम एक्सेल फाइल को, जब भी हम एक्सेल फाइल को अपलोड करते हैं कहाँ पे, गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं, गूगल ड्राइव में रिसेंट फाइल्स, तो वो कन्वर्ट होती है गूगल शीट में। देखिए फिलहाल मैंने इसको ओपन नहीं किया है, फिलहाल ये अभी क्या है, फिलहाल अभी भी ये एक्सएलएस फाइल है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा तो ये फाइल ओपन होगी गूगल शीट में। तो गूगल शीट इज इक्वलेंट टू योर व्हाट, एक्सेल फाइल। तो लेट मी चेक इट, डबल क्लिक कर रहे हैं हम। तो ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, देखिए गूगल शीट में। ओके, मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूं अभी, नंबर 11। यूजीसी की वेबसाइट पे हमको जाना है, रीडायरेक्ट करना है और www.ugc.ac.in। ओके, दिस इज द वेबसाइट ऑफ योर यूजीसी। मैं इसको, तो एक फिर से याद रखिए, जब भी आप गूगल फाइल मतलब सॉरी एक्सेल फाइल को जब भी आप गूगल ड्राइव में ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू अ गूगल शीट। ओके, अगर आपको लगा कि बाद में फ्यूचर में कि गूगल शीट में आपने जो भी अपलोड किया है उसको एक्सेल में चाहिए, तो फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इन एक्सेल फॉर्मेट में। जो भी आपने गूगल शीट में चेंजेस किए उसको अगर आपको फिर से वापस एक्सेल में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो इन एक्सेल फॉर्मेट। ओके ना, तो हम जा रहे हैं अभी हमारे वेबसाइट पे फिर से। तो वेबसाइट में हम जाके क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, शीट, गूगल शीट। गूगल शीट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जितने भी शीट के फाइल होंगे वो सब हमको दिखाएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। और ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो हमारे रिसेंट फाइल होंगी, लेटेस्ट फाइल, वो सब हमको कहाँ दिखाएगा, एट द टॉप। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा या फिर डबल क्लिक करो, दैट्स ऑल। तो ये आ गया यहाँ पे। So can you please repeat? यस, यस मैडम।
ये तो क्लियर हो गया मैडम कि आपको एक्सेल से गूगल शीट में कैसे लाते हैं। Yes. ओके, तो अभी हमने क्या किया, देखिए मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी हमको क्या करना है, शीट नाम की जो फाइल है उसको हमको यहाँ पे ओपन करना है। तो देखिए हमारे पास इंसर्ट में एक ऑप्शन है शीट, नीचे में दिख गया ये। हाँ हाँ हाँ, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी लेटेस्ट फाइल होंगी, जो हमने वीडियो लिंक नाम की फाइल अभी बनाई थी, वो हमको यहाँ पे दिखेगी बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं 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 होंगी तो हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। नहीं होगा तो हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अगर ये फाइल नहीं होंगी, कोई और फाइल होंगी, तो हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। तो उसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक कीजिए, दैट्स ऑल। Okay, sir. It is asking for the caption. Why asking? Let's try for something else. Let me view it. It is asking for caption. अब खुल गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पहली वाली फाइल लेते हैं, हमने दूसरी वाली फाइल ले ली थी गलती से, यूजीसी ओपन करना था। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। पहली वाली फाइल जहाँ पे हमने यूजीसी लिखा था। ओके, इसमें भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से हम एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। नाउ सी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। आई एम नॉट ए रोबोट। और ये मुझे पूरे लिंक दिखाएगा। अब आपका स्टूडेंट क्या करेगा, जो भी आपको मतलब पहला वाला फाइल है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, पहली लिंक ओपन हो जाएंगे उसके। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही शीट में पूरे हम लिंक दे रहे हैं हमारे। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द एडवांटेज। ओके, ये हो गई हमारी पहली वीडियो। जो दिखाना है स्टूडेंट को, लगा कि ये गूगल गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं उसके बारे में कुछ देखना है। ओके, क्लिक कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, सिंपली रीडायरेक्ट कर रहा है। देखिए, it is simply redirecting to the pages, nothing else. So what we have done in the Google Sheet, we have given a name of the content, and followed by, in the same, we have given what, the link of that file. The link of that file, that is the only thing that what we have done. यहाँ तक क्लियर है सभी को, हमने क्या किया एग्जैक्टली? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। Yes, तो sir. हम यूजीसी की वेबसाइट पे जाके देखते हैं। चलो, कोई भी वेबसाइट है, खाली हमको लिंक देना है, नथिंग एल्स। प्लीज रिमेंबर, इट इज सिंपली इट इज अ मैटर ऑफ लिंक, नथिंग एल्स। कोई भी लिंक which is a valid one. Okay, so that you can give in your website. You can include those things in your website. Sir, so whenever any video or anything has to be shared, we will prepare the link list in the Excel sheet or the Google Drive sheet that is there, right? Pardon? So whenever we want to give a link for video uploading or whatever videos or websites, other things that people have to refer to, we will prepare that list in a sheet. Obviously, Yes. because why I'm saying is that because displaying such, assume that you have suppose 50 videos, and if you are showing like this, it will be very difficult for the students to मतलब what you can say, that scroll करो, इतना नीचे जाओ, scroll करो, check करो कहाँ पे videos, and then click on that. It's a time consuming job. So better approach is what, give the what,
समथिंग लाइक Links. दिस, हाँ Yes. समथिंग लाइक दिस, ओके। Okay. कि मतलब टॉपिक का नाम दे दिए, लिंक दे दिए, खत्म। इट्स वेरी सिंपल एंड इट इज नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग। कुछ भी मतलब हमारे वेब पेज पे कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, नॉट अ सिंगल केबी एग्जैक्टली, अगर हम देखा जाए तो। क्लियर? So, Yes, sir. thank you. So now, shall we take a break or shall I continue? I don't know what is the way of So break. break is there. Okay. So कितना break रहता है? I don't know exactly. Yes, anyone from administration side? 15 minutes right now, bro. 15 minutes. Okay, so now it's a 2:35, so we will gather here by 2:50. Is it okay? 12:50, sorry, 12:50. Okay, sir. Okay, thank you. In the meantime, if you have any doubt, please note it down. So we will resolve all those doubts.
Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So we were here, okay. Now let's see, अगर ये तो पॉसिबल नहीं कि एक दिन में पूरा वेबसाइट बन जाए आपका, तो मैं फिलहाल इसको क्लोज कर रहा हूँ. तो फिर से हम ओपन कैसे करेंगे? सेम गूगल ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, दैट्स ऑल. So for we have how many options? Home, syllabus, books, table of content, study material. Now what I would like to do, let's see. I would like to have one option called as say study, and under that I would like to have syllabus, books and table of content. It means I would like to create a menus, and within that menu we would like to have 3 sub options. So how it can possible? Let's see. Page. First of all, I'm creating a new page. Say study or class. Say 12 only, okay. Or otherwise say MCA. Done. And under that, I would like to have syllabus, book and study material. So how it can possible? Let's see. ड्रैग ड्रैग कीजिए और MCA के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए. सिमिलरली सिलेबस को सिलेक्ट कीजिए, MCA के ऊपर ड्रॉप, एंड फाइनली बुक्स. Let's see how it works. Is that clear to all of you? Yes, no? Or shall I repeat? Sir, it's clear, sir. Okay, thank you. Okay. Now फिर से एक बार हमको लगा कि सपोज वीडियो भी चाहिए तो वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और MCA के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप. Like I earlier said, you need only a knowledge of drag and drop and creating the link in order to create this website, nothing else. Okay, it's very simple to create the website of your own. Now, the next thing that we're going to discuss under the insert option is about the doc and slides. About the doc and slide. So what is doc? Doc is nothing but your equivalent file of Word. जब हम वर्ड में फाइल बनाते हैं उसी को गूगल में हम क्या बोलते हैं? डॉक. सिमिलरली जब हम विंडोज में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं PPT पावर पॉइंट, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं गूगल ड्राइव में स्लाइड्स. ओके, नथिंग एल्स. तो वो भी अगर मुझे स्टूडेंट के साथ इंक्लूड करना है स्टडी मटेरियल के अंदर तो कैसे कर सकते हैं? सो आई एम क्लिकिंग ऑन द स्टडी मटेरियल पे. यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं अभी
doc and slide. So let's see. Doc file. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभी डॉक फाइल्स मिलेंगे आपके। फिर से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फाइल कैसे लाते हैं आप। अगर आपको गूगल ड्राइव में लाने का हो तो क्या करना है, कोई भी आपकी जो वर्ड फाइल, उसको खाली फाइल अपलोड करो गूगल ड्राइव में, उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे खुलेगी, गूगल डॉक में खुलेगी। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके। और उसके बाद आपको जो भी कंटेंट चाहिए उस फाइल को आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको देखना है कैसे करते हैं एक बार तो आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं। फाइल में जा रहा हूं मैं, न्यू ब्लैंक फाइल बना रहे हैं हम यहाँ पे। और मैं यहाँ पे अभी इतना सारा मैटर तो लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो मैं एक रैंडम नाम का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। So I want a 4 paragraph, so it will automatically create the 4 paragraph for me. Okay, so save this file. Again, I'm going to save it on a desktop. For quick access, nothing else. Doc, Word to doc. This is my Word file. And then I'm going to convert it into a doc file. So I'll give the name Word doc file, nothing else. हम जा रहे हैं अभी फिर से गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड। Which file? Your Word file, which you have stored in a desktop. Okay, open it. Ma'am, you proceed. I'll join it too. नाही ऐका ना, जेवणाबद्दल महत्वाचं नाही माझं, हे मला हे नाही कर, नंतर कळणार नाही मला ते. Hello, 24 number. I'm also a teacher. I know what are the thoughts that are going in your mind. Okay. Now click on the recent. यहाँ पे आपकी वर्ड फाइल ओपन होगी, simply double click on over here. So it will be automatically converted into a doc file. Please remember, it will be automatically converted into a doc file. Okay, I am simply going to give the heading, nothing else over here. Suppose the heading is how to create video. ओके, ऐसा हमने कुछ लिखा है। अब यही फाइल मुझे क्या करना है, स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। तो प्लीज रिमेंबर, आपकी फाइल भली वर्ड में है, आपने वर्ड फाइल में बनाई हो, लेकिन जब आप उसको गूगल ड्राइव में लाएंगे तो प्लीज रिमेंबर इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू अ गूगल डॉक फाइल। रिमेंबर इट ऑलवेज। सो IICT हमारे वेबसाइट में जा रहे हैं और वो मुझे फाइल यहाँ पे भी चाहिए मेरे वेबसाइट पे। तो इंसर्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, डॉक फाइल। सिंपली सिलेक्ट ऑन द डॉक ऑप्शन, वर्ड फाइल टू डॉक। ओके, डबल क्लिक ओवर हियर, तो ये आ गया आपके वेबसाइट में। आप इसको अरेंज कर सकते हैं पोजीशन जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे। दैट इज, इट इज नॉट अ बिग टास्क। ओके, प्रीव्यू करके देख लो एक बार। Again, it is asking for I am not a robot. Okay, it is just for verification, nothing else. Okay. So in this way, you will be able to access all your Word files with your students. One way is what? One way is we have seen already, that is using the buttons. Okay. Second one is what? Image. Third one is, देखिए यहाँ पे मैं पॉप आउट कर सकता हूँ और यहाँ पे फिर से हमारे पास ऑप्शन क्या है, डाउनलोडिंग। फिर से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन योर वर्ड फॉर्मेट, नो इश्यू एट ऑल। You are uploading the files in your doc file. Now student have an option to download it in your Word file. Okay, that is the basic advantage. Similarly, assume that you have created certain presentation using the PowerPoint.
Okay, now you can upload that PowerPoint in your Google site. How? Simply click on the slides. फिर से हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी स्लाइड बनाई थी, उसको आपने ऑलरेडी गूगल ड्राइव में अपलोड किए हैं और फिर उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं. दैट्स ऑल. फॉर एग्जाम्पल, okay, let's preview it. Second one. And now this is what your PowerPoint. Sorry. पॉप आउट करके देख सकते हैं आप. And student is also able to download your PowerPoint presentation. Clear? So in this way, you will be able to share a different types of what e-resources with your student. E-resources with your students. So now let's see what हमने अभी तक क्या क्या देखे. We have seen how to work with the text box, then images. So far, we are not discussed about the embed and drive. We will discuss about it later on. Then we have seen the content block, collapsible group. We have seen the table of content, and now image carousel. Let's see what is image carousel. Again, assume that I'm going to add one more page. I would like to have a gallery. Over a period of time, number of programs have been arranged by your department, and you would like to include all those photos in your website. So how it can possible? One way is what? Insert the images one by one. The another option is what? Image carousel. Simply click over here and you need to have at least 2 images. कितने images होने चाहिए? Minimum 2. So I am clicking over here, add images, upload the images. जो भी images होंगे वो सब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे upload कर सकते हो. And now assume all my screenshots में देखते हैं हम कुछ pictures है क्या? Yes, there are certain screenshots. Let's see. हमने 4 पिक्चर लिए, insert करो बोल रहे हैं. Okay. So it will take a fractions of time to get it load on your website. There are 4 images. Let's try a preview. Gallery. So creating a gallery is very simple. It is taking a time to load. Hello. Yes, madam. Let me close it. Once again, open it. Preview. So you will be able to view all the your जो भी आपके वीडियोस है, जो भी आपके सॉरी इमेजेस है, वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वन बाय वन स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो एंड दे विल बी एबल टू सी ऑल दीज इमेजेस. Okay. So instead of again, what is the method that we have followed? Image carousel. Rather than selecting what? Images one by one. So you can add as many as image that you would like to have, that you would like to show to your student, or that you would like to show with your visitors. Okay, that is very much possible using this technique called as image carousel. Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now it's a kind request to any one of you to share your address, UGC address. Or otherwise, we will create one more page called as contact us. Contact us. Okay. Done. Okay. Now we have one contact us option, and here I would like to show the say map of your UGC HRDC Aurangabad. How it can possible? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारे पास मैप. ओके, क्लिक ऑन द मैप, गिव द एड्रेस, एंटर द लोकेशन. फॉर एग्जांपल UGC HRDC Aurangabad. Let's see what it is showing. Yeah, it's there. Okay.
यहाँ पे आ गया है मैप। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में एक अच्छा सा मैप, आपके लोकेशन का मैप क्या कर सकते हो यहाँ पे अपने विजिटर के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट they can visit the website by simply using this particular Google map. Okay, this feature is available in Google site in order to have what a Google map for you. Okay, so we have covered almost all except few one, the forms and charts. Except forms and charts. So how to create this Google map is clear, all of you? Very simple. Yes, Simply sir. हमको एड्रेस डालना है, simply एड्रेस डालना है, that's all, nothing else. Now here only I would like to have कॉन्टेक्ट अस में हमको क्या करना है, हमारा फेसबुक का पेज भी देना है, जीमेल का अकाउंट एंड से यूट्यूब का चैनल, ऐसा कुछ है, वो भी हमको यहाँ पे क्या करना है, सपोज शेयर करना है कॉन्टेक्ट अस में। तो हाउ इट कैन पॉसिबल, बाय मींस ऑफ व्हाट, सोशल लिंक ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोशल लिंक का एक ऑप्शन है, सिंपली क्लिक ओवर हियर। तो लिंक देना है मुझे बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1। तो पहला इमेज को अपलोड करना है, कोई जरूरी नहीं कि रहे आपके पास, अगर होगा तो बेहतर, बिकॉज पिक्चर इज मच मोर बेटर देन द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो गूगल सोशल इमेजेस, फॉर एग्जांपल मेल। तो यहाँ पे आपका जो भी होगा, अज्यूम करें कि इस आपके कॉलेज का होगा, जो जो भी होगा, मतलब कॉलेज का होगा। अगर आप पर्सनल वेबसाइट बनाओगे तो आपका पर्सनल वेबसाइट कराएगा। ओके, देन सेकंड वन, अज्यूम करते हैं कि फेसबुक का, तो मुझे फेसबुक की लिंक देनी पड़ेगी। तो आई विल डू वन थिंग, फेसबुक अकाउंट मेरा ऑलरेडी ओपन है। ओके, कॉपी इट एंड पेस्ट ओवर हियर। ओके, इन दिस वे आपको जितने भी लिंक देने हैं, सोशल लिंक के, इंस्टाग्राम देना है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 दिखा रहा है, आपको जितने चाहिए उतने आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन मोर, लिंक्डइन। Let's again open the LinkedIn option. Okay, copy it, paste it like that way. तो इस तरह से आपको जितने भी करना है कीजिए एंड फाइनली क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, दैट्स ऑल। तो देखिए ये अपने आप यहाँ पे आ गया। आई एम ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ पे भी आपको चाहिए। सॉरी, अंडू कर लेते। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको स्मॉल में चाहिए, कैसे चाहिए, लार्ज, सर्कल, शेप, स्क्वायर में चाहिए एंड सो ऑन। तो व्हाट इज एडवांटेज नाउ, देखिए यहाँ पे मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ और आपका विजिटर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर रहा है फेसबुक पे, तो डायरेक्टली इट विल ओपन व्हाट, द फेसबुक, इट विल बी रिडायरेक्टेड टू द फेसबुक। सिमिलरली अदर्स। Clear, all of you, how to work with this social link element? सोशल लिंक एलिमेंट के साथ कैसे काम करना, समझ में आ गया आपको? ये कुछ नहीं, हमको खाली लिंक देना है, नथिंग एल्स। यस, ऑल ऑफ यू? Yes, sir, it is clear. Yes, sir. Now one more option and then we will see regarding this option, publishing and other settings for your website. Again I am back to study materials। एक बार मैं चार्ट का बता देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि आपने कुछ ऑलरेडी चार्ट बनाया है और उसको शेयर करना है आपको, नथिंग एल्स, इट्स नॉट अ बिग डील। चार्ट के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, तो जो भी आपने लेटेस्ट चार्ट बनाया होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, रिसेंट चार्ट। चार्ट जनरली हम एक्सेल में बनाते हैं, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल का दिखा रहा है फाइल हमको।
ये चार्ट यहाँ पे है, select it and click on the insert button. Okay, so in this way you can also create what? You can also share the chart with your students. The number of marks that has been scored by the Naresh and Ajay, total marks. Okay, you have created one chart and you would like to share that with your students. No issue. Simply select the element called as chart and then open the appropriate chart that you already created. That is the only thing that you need to do. Now the important one is your form. Google form. I hope that all of you are aware about the Google form. What is the use of Google form? Data collection. Okay, it is useful for collecting a data. Okay, correct. So since we have already created one page called as contact us, एक minute. I don't want this contact us within this MCA. It is not a sub option. I want it should be a separate head. So what you need to do, simply again drag and बाहर में लेके आइए. Okay, अगर गलती से कभी चला गया तो आप इस तरह से कर सकते हो. Now contact us में आ रहे हैं हम. Now here, assume that I have already created one Google form. Let's see. The name of that form is contact us. And contact us में आपने लिखा है write your name and finally how was session. ऐसा आपने कुछ भी दिया, how was your session, या फिर आपको जो भी मतलब whatever the feedback, kindly give your feedback, ऐसा आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दिए. ये आपको क्या करना है, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना है. तो हाउ पॉसिबल. तो इस तरह की हमने फॉर्म बना ली है. फाइनली हम हमारे वापस वेबसाइट में आ रहे हैं और हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं फॉर्म. Okay, contact us and now click on the insert button. तो गूगल यहाँ पे आ गया है. मैं इसको फिर से थोड़ा प्रॉपरली ले लेता हूं एक जगह. ओके, ये बंद तो गया है, लेकिन अभी मैं इसको शेयर कैसे करूंगा आप लोगों के साथ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लेफ्ट. नाउ लेट मी सिंपली रिवाइज वंस अगेन व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार. आई एम क्लोजिंग दिस आईसीटी. देखिए, in order to create the website, first of all, it is necessary that you must have your Gmail account. Then finally click on the drive. Google Drive में जाएंगे हम. Google Drive से हम क्या कर रहे हैं, Google मोर में जाएंगे. मोर में जाके हम क्या करेंगे, गूगल साइट पे क्लिक करेंगे. ओके, जैसे हम गूगल साइट पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक वाला ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा खुद का बनाया है आईसीटी नाम का एक वेबसाइट. सॉरी, आईसीटी. So by default it will open you only single page. Okay, so हमने क्या किया, उस पेज पे हमने नाम दे दिया UGC/SRDC. ओके, और उसके बाद हमने थीम चेंज किए. थीम के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे थीम ऑप्शन पे गए और हमको जो भी थीम चाहिए थी वो हमने सिलेक्ट कर लिए. आप चेंज फिर से थीम जब चाहे तब चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक बार आपने सिलेक्ट किया वही रहना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि एडवाइजेबल कि पहले थीम सिलेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आपको जो भी एलिमेंट चाहिए वो सिलेक्ट कर लो. ओके, then we have an option called as pages where you can insert n number of pages as per your requirement. There is no issue that how many pages you can have. Okay, after inserting the pages, in each page what kind of element you would like to have, you need to select what the kind of element that you would like to have in each and every page. So there are n number of what the elements are available for you. The text box is there, images, then content block, collapsible group, table of content, image carousel, button, divider, spacer, social links we have seen, then YouTube, map, doc, slide, sheet, forms, and chart. Okay, so there are n number of elements are available for you. So depending upon the page that you are going to create, you need to use a certain element according to your requirement. Once you have inserted all those elements, the next thing is what? Preview. You can always preview what you have created. It means how your page is going to be appear on user screen. Okay,
So for that purpose, it is always better to have what a preview after making any certain changes. Whenever you are doing certain updation, make sure that how it is going to be appear on the user screen, how the user is going to view that particular, उसको कैसे दिख रहा है, that is important. तो ये भी देखना जरूरी है कि ये जो यूजर को दिखने वाला है वो मोबाइल यूजर को कैसे दिखने वाला है. ओके, चेक करते चलो. देन फॉर टैबलेट यूजर अगर देखेगा तो उसको कैसे दिखेगा, एंड फाइनली लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर होगा तो उसको कैसे अपीयर होने वाला है. मेक श्योर ऑल दिस थिंग. ओके, देन after creation of this all these things, the final stage is what, publishing the website. ओके, क्योंकि आपने क्या किया, खाली वेब पेज बनाया, अपने जगह पे बनाया है, लेकिन फिलहाल कोई भी पब्लिक डोमेन में आपका वेबसाइट गया नहीं है. पब्लिक डोमेन में हमको क्या करना है, जो भी आउटसाइड पब्लिक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करे, आपकी वेबसाइट से विजिट करे. तो ये सब कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, पब्लिश. नाउ ऑल ऑफ यू बी केयरफुल. ओके, यहाँ पे जो मैं चीज करने जा रहा हूँ सेकंड टाइम रिपीट नहीं हो पाएंगे, तो बी केयरफुल. सिंपली क्लिक ऑन द पब्लिश. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, वेबसाइट का एक एड्रेस देना है जो आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पे रहे. ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ, देखते हैं यूजीसी डैश HRDC औरंगाबाद. लेट ट्राई इट, इज इट अवेलेबल और नॉट. यस, इट इज अवेलेबल. मतलब हम इस तरह का वेबसाइट यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. देखिए हमने डोमेन का नाम खुद हमने सिलेक्ट किया है. ओके, देन नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑफ दिस एंटायर, जो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा बोला था, वो ये है. यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है आपको. ओके, यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है. इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्लिक करता हूं तो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो रिक्वेस्ट द पब्लिक सर्च इंजिन टू नॉट डिस्प्ले माय साइट. रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजिन. पब्लिक सर्च इंजिन कौन कौन से आपके पास, बहुत सारे सर्च इंजिन है. फॉर एग्जांपल गूगल इटसेल्फ इज वन सर्च इंजिन. तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अगर कोई आपके वेबसाइट को सर्च करे तो उसको ना दिखे. तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे. इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम वेबसाइट तो बनाना चाहते हैं, बट इट शुड नॉट बी इन अ पब्लिक डोमेन. आई वुड लाइक टू हैव व्हाट, मेरा जो कॉलेज के जितने भी ब्रांचेस है खाली वही लोग देख पाए, जिनके पास ये लिंक है वही लोग देख पाए. ऐसा जब मुझे लगता है तब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा. ओके, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो पब्लिक डोमेन में सभी उसको एक्सेस करे तो मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा. इज दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो सर. यस सर. ओके, अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं पब्लिश पे. जैसे ही मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा उसके पहले एक बार चेक करो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कैंसल. देखिए यहाँ पे एक लिंक दिख रही है, जहाँ पे लिख के आ रहा है, देखो कांट कॉपी द लिंक फॉर अनपब्लिश साइट. ये अभी एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है. जब तक हम पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिव होने वाला नहीं है. ओके, तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ. देखना जब मैं यहाँ पे पब्लिश करने के बाद वो क्या हो जाती है, लिंक. पब्लिश पे क्लिक कर रहे हैं हम, और देखिए लिंक हो रही है अभी, यहाँ पे एक्टिव हो गई है. ओके, इसी लिंक को हमको क्या करना है, सबके साथ शेयर करना है. दैट्स ऑल. ये मेरी क्या है, लिंक है, जो मैं भी आपके साथ आपके चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूं. और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको अपने जो भी ड्रॉप मतलब फीडबैक जो भी देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर कोई डाउट होगा तो वो भी आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो. ओके, नाउ क्लिक ओवर देयर एंड आइए यहाँ पे, मतलब देखते हैं आपने क्या क्या फीडबैक दिए. देखिए मैंने आपके चैट बॉक्स में लिंक शेयर किए, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए. दैट्स ऑल. तो आपके जो भी रेस्पॉन्सेस है वो यहाँ पे आना चालू हो जाएगा. अभी तक ये भी रेस्पॉन्स नहीं आया है. आपको वहां पे खाली मेल नेम, आपका मेल डालना है, देन आपका नाम, एंड फाइनली रेस्पॉन्स.
Yes, anyone facing any issue? There is one response. Okay, from Pallavi. There is a second response from Rupa. ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डबल क्लिक कर लेता हूँ और लिंक टू शीट कर देता हूँ इसको। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्सेल में देखेंगे आपने क्या लिखा है। 4 responses, 5 responses. Okay, good, thank you. देखिए इस तरह से क्या हो रही है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट होती जा रही है। देखिए हमारे क्या ऑप्शन था हमारे इसमें, डिस्कशन कैसे होने वाला है आपका स्टूडेंट के साथ। मूक के अंडर में एक ऑप्शन था, फीडबैक कैसे लेंगे आप स्टूडेंट के थ्रू। तो यूजिंग दिस गूगल फॉर्म व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू इंक्लूड दैट विद इन योर वेबसाइट, and through that you are collecting what, the various information, you are collecting the various feedback. Students were active, rest of them okay, no issue. Thank you all of you. Now coming back again to our website. So yes please, if you have any doubt till now please ask me. यहाँ तक सर हम वो क्लिक कर रहे हैं ना, आपके ने जो लिंक दिया है, हाँ, तो वहां पे हमको कुछ अलाउ नहीं हो रहा है, वहां पे सिर्फ आपका फोटो दिख रहा है वहां पे। और मैडम हाँ, बाकी सभी लोगों ने तो दिए मैडम, इंफॉर्मेशन शेयर की मेरे साथ, आपके सामने ही दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखिए। देखो वहां पे और एक का नहीं हुआ सर, नॉट गेटिंग ओपन, एक मैसेज आया जो गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म पे क्लिक करना मैडम आपको, बाकी कुछ नहीं। वहां पे आपको कॉन्टैक्ट अस नाम का ऑप्शन आ रहा है ना, कॉन्टैक्ट अस में आपने अभी जो लिंक मिली आपको चैट बॉक्स में, वहां पे क्लिक कीजिए। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना है। अच्छा, ओके कॉन्टैक्ट अस के पेज में जाना है आपको। ओके ओके सर, ओके। बाय डिफॉल्ट आप होम में जा रहे हो, आपका जो हाँ पेज आ हाँ, रहा है वो आपका पेज आ होम आ रहा रहा है आ वहाँ। हाँ, वहां पे मेरी फोटो है होम पेज पे। अच्छा, ओके सर, आपको जाना है कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सो एनीवे थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अभी और चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। So, Yes. can I ask? Yes, ma'am. Please. Open. It is open session only. How now this website we can make it ourselves. Yes. We can make it ourselves. How this is different from the one which we get it done from the people outside. From the third process. party. Okay. Outsourcing. From third party. Okay. It's very simple. Okay. See, what we have done is completely static pages. Whatever the website that we have created is purely a static pages. It is not a dynamic pages. Okay. Google site does not allow you to create the dynamic pages. Okay. That will come under the paid version. Okay. Just to show a basic information, just to access certain information, just to store certain information, you can create your own website. मतलब हमको इसी तरह से करना है। आपका वेबसाइट करना मतलब क्या है, गूगल ड्राइव में जाएंगे, वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट पे, और फिर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप बच्चों के साथ शेयर करना रहते हैं वो यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे। डायनामिक पेज नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अज्यूम करें कि आपकी स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको कहीं सेव करके रखना है। ओके, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग हियर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट मैडम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got Okay, it. we are not. Yes, please. Any other question? Yeah, sir. How is the Google site different from WordPress developed sites? WhatsApp is the social media app. It has nothing to do with the website. But in using website, what we are doing, we are simply integrating the various information. In a website, you can have this is the image, you can have videos, you can have a PDF file, you can have a textual image. Okay, so you can integrate a different types of what e-resources material within the website. And what is the advantage? You are simply giving the links and you are able to organize your page. For example, here I have created what MCA का मैं पूरा यहाँ पे information दे रहा हूँ. I can create one more page say MBA. Assume that in my college both courses are there, or in my department both courses are there. So I can create a one page on MCA, one page on MBA. So it means organization of the information is very much easy using the website, which is not possible in your WhatsApp. Okay, WhatsApp is what simply chatting message, nothing else. Okay, madam.
Yes, yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, any more? Okay. Now we will move little bit ahead. Now here at the bottom, जब आप bottom में जाएंगे किसी भी पेज पे जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा footer. You can always create a footer. Add footer देखिए, जैसे आप नीचे में आ जाएंगे थोड़ा यहाँ पे add footer आप दे सकते हो. So here I am giving the designer. Okay, again you can color all those things. It's very simple that we already seen. But whatever the changes that I have done or whatever the changes that I am doing, that is not going to be reflect. Please remember, those are not going to reflect. अभी मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो आपको वेबसाइट में नहीं दिखेगा जब तक मैं ये चेंजेस जो मैंने चेंजेस किए उसको मैं जब तक फिर से रीपब्लिश ना करूँ. So what I mean to say is that whenever you are publishing a website and whenever you are making any kind of updation, it is necessary that you should republish your website. So how to do it? Simply again click on the publish or simply click over your arrow. यहाँ पे arrow पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा review changes and publish, review changes and publish. That's all. तो रिव्यू चेंजेस में वो क्या बता रहा है आपको, आपने जहां जहां चेंजेस किए वो आपको पूरा बताएगा. देखिए हमने चेंज कहाँ किए, खाली अपडेटेड द फुटर कंटेंट. दिस इज द ओनली वन चेंज वी हैव डन. सो वुड यू लाइक टू पब्लिश इट अगेन? यस. इसका मतलब क्या हो गया, ये रीपब्लिश हो गया. लिंक सेम रहेगी. हाँ, लिंक सेम रहेगी, मतलब पब्लिश रीपब्लिश हो रहा है ऐसा मतलब लिंक चेंज नहीं हो रही. इट इज गोइंग टू बी रिमेन द सेम. ओके. So what is important, whenever you are making any kind of changes, don't forget to republish it. Otherwise, your audience or your viewer may not be able to view the kind of updation that we have done. Clear this point? Yes, sir. Yes, sir. Thanks. Okay. Now, at any moment, if you want to unpublish, you can always unpublish. आपने जो भी वेबसाइट बनाई आपको लगा कि उसको unpublish करना है तो you can always unpublish, no issue at all. और unpublish करने के बाद फिर से आप उसको क्या कर सकते हो, publish कर सकते हो जब भी आपको लगा फिर से. So there is no कितने बार उसको कितने बार आप उसको republish कर रहे हो, कितने बार unpublish करने के बाद फिर से publish कर रहे हो, ऐसा कोई rules and regulation वहां पे नहीं है. You can do as many as time you want. Now, here there is an option called as settings that I would like to discuss with all of you. Before that, यहाँ पे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपकी एक दो जनों के साथ, कोई भी एक दो जन मेरे अपने चैट बॉक्स पे आपका ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर कीजिए. चैट बॉक्स में in chat box, please share your email IDs, any one of you. Otherwise I can also copy it from there, no issue at all, क्योंकि गूगल फॉर्म में मेरे पास ऑलरेडी है. यस, आई गॉट वन. यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, शेयर विथ अदर्स, कोलैबोरेशन वर्क. नाउ वी आर गोइंग टू सी इट मे पॉसिबल कि एक वेबसाइट खाली एक ही अकेला आदमी काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है. देयर आर a number of people that may be associated with whenever someone is creating what, a website. So this one is first person. ओके, आप उसको किस तरह का ऑप्शन देना चाहते हो, मतलब किस तरह का एक्सेस मैकेनिज्म देना चाहते हो. सो यू आर मेकिंग हिम एज ए एडिटर. यू कैन ऑल्सो हिम मेक व्हाट, पब्लिश व्यूअर. तो हम उनको बना रहे हैं एडिटर. लेट ऐड वन मोर. एनीवन? अच्छा, आप में से कंफर्टेबल है सभी लोग लैपटॉप में है कि मोबाइल में? दोनों आने से. Okay, here Shirsagar is there, someone, so I am adding Shirsagar. देखिए मैंने दो जनों को ऐड किया है. प्लीज रिमेंबर बोथ ऑफ यू, आपको अभी जैसे मैं यहाँ पे सेंड क्लिक करूंगा आपको एक मेल आएगा, उस मेल के ऊपर क्लिक कीजिए. आप दोनों को मेल आया है, क्षीरसागर एंड आई थिंक रूपा. यस, आ गया मैडम आप लोग को, रूपा एंड क्षीरसागर. आपको एक मेल आया होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. Yes, sir. Open.
Yes, I have opened the mail. यस मैडम, Yes, sir, I have opened the mail. आ गया ना? Yes, yes. हेलो, वाई? I got the mail, sir. I have opened it. यस, थैंक यू मैडम। मिस्टर रूपा और श्री सागर। It's Rupa. ओके, ऑल ऑफ यू देखिए, यहाँ पे भी उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। उनकी फोटो, अगर फोटो होंगी तो फोटो भी आ जाएगी यहाँ पे। व्हाट अबाउट क्षीर सागर? If any issue, kindly let me know, please. Anyone जिनका मेल बॉक्स ओपन है, जिनके साथ मैं अपना फिर से शेयर कर सकूं? यस सर, अमित सरकार, रोल नंबर 3। एक मिनट। Sir, roll number 21 open. 21 to everyone. Doctor gmail.com. Yes, sir. Okay. Dr. Sucheta Yambal. Okay, I am sharing. एक भी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कोलैबोरेटर में। यस, आपको देखिए मेल आ गया होगा अभी। यस अजिंक्य जी, आपका नंबर कौन सा बोले सर? यस मिस्टर अजिंक्य, व्हाट्स योर नंबर? सर अमित सरकार। अमित सरकार, मेल आईडी? अमित सरकार शेयर कीजिए ना। 988। नहीं, शेयर कीजिए प्लीज, शेयर इट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स? हाँ, चैट बॉक्स में शेयर कीजिए प्लीज। यस रूपा मैडम, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग? I have shared with the 3 people. So far, no one have joined. Yes, any issue? अमित सरकार सर नहीं आया है। यस अमित सरकार, मैं कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, अमित सरकार, ओके, वन मोर। यस अमित सरकार जी, आपको ऐड किया मैंने। आपको मेल चेक कर लीजिए एक ना। So far now I have shared with the 4 peoples. Yes, Rupa madam, Shiv Sagar. Yes, एक आया, अमित सरकार जी आ गए। गुड अमित, गुड। थैंक यू सर। Now one more, एक, I would like to have one more immediately. Sir, I have also joined in. No madam. If you could see. No, I am not able to see. अच्छा, डॉक्टर सुचेता यम्बल। नो, कहाँ पे ज्वाइन है आपने? लिंक पे क्लिक किए क्या आपने? आपको जो ईमेल आया उसके ऊपर क्लिक किए क्या आपने? जी। नहीं मैडम, यहाँ पे तो एक ही नाम दिख रहा है। देखिए मेरे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखिए, खाली अमित सरकार दिख रहा है।
ऑल ऑफ यू, आपको सभी को दिख रहे हैं क्या? दो नाम की एक ही दिख रहा है? एक ही है सर। एक ही है, गुड। एक। आपको मेल आया होगा, मेल के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, नथिंग एल्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे आप आ जाएंगे अपने आप। Sir, it's showing error. सर ओके इट्स शोइंग टू मी, लेकिन यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। ओके ओके मैं ओके खोल पा रही हूँ इसको। ओके ओके, चेक करते हैं आपको ओपन हो रही है कि नहीं। आप यहाँ पे कीजिए कि यहाँ पे यूजीसी जो लिखा ना, वहाँ पे u.g.c कीजिए, चेक करते हैं। u.g.c हो रहा है। और मिस्टर अमित, यस सर। यहाँ पे देखिए यस.b.किशोर लिखा है ना, वहां से बी निकाल हाँ दीजिए। सर, वहां से बी निकाल दीजिए। बी निकाल दो। हाँ, बी निकाल दीजिए, दैट्स ऑल। यस किशोर, यस गुड। खाली अमित, मतलब अमित ये एक्सेस कर पा रहा है, बाकी के लोग नहीं कर पा रहे हैं। डॉट बी निकाल लीजिए, फिर से एक ऐड कर लीजिए बी। मिस्टर अमित फिर से बी ऐड कर लीजिए। ओके सर। बाकी के लोग कोई भी अभी तक एक्सेस नहीं हुआ है। यस मैडम, सुचिता मैडम, आप बोले कि ऐड हुए है, तो आप जो चेंजेस कर रहे हो तो हमको दिखना चाहिए। सर आई एम एनीवे, ट्राइंग, आई विल लेट यू नो। ओके। So anyway, what is my point here is that it is not possible for single person to create the website, especially when you are talking about the colleges. It might be possible that there are a number of people are associated with that particular website. So what you need to do, simply click over here, okay, share with other, and simply you need to give what you need to specify here the mail ID and finally click on the done. That's all. ओके, नाउ जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको रिमूव कर सकते हो। यहाँ से देखिए, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मिस्टर अमित सरकार यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं उनको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मैंने वेबसाइट बनाने के बाद मुझे लगता है कि आगे से जो भी काम है अमित ने उस पर काम करना चाहिए, तब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओनरशिप को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ मेरे वेबसाइट की। ओके, so these are the options that are available whenever you are creating the website. Okay, first thing is that you are able to work in a collaborative manner with a n number of people, no issue at all. You can also transfer them your ownership, as well as whenever you feel that someone is no more required in your work, so you can also remove from what, from your collaborative work. Is that clear to all of you? यस सर। Okay, done. तो जैसे हमने यहाँ पे अभी चेंज कर रहा है, तो किसी और पेज पे कोई और चेंज कर सकता है एट ए टाइम। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग पेजेस पे काम कर सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव वर्क इन अ सिंगल पेज, n number of people are working, no issue at all. So we have seen about this, and now finally we will discuss about this setting option. Okay, we have covered almost all the points. Okay, now only thing is left is what, setting. Now setting में देखिए, सेटिंग में कुछ ऑप्शन यहाँ पे, नेविगेशन, ब्रांड इमेज, व्यूअर टूल्स एक्सेट्रा। सो वी विल सी फ्यू वन। देखिए, बाय डिफॉल्ट हमारा मेनू ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, हमको टॉप में दिख रहा है। देखिए, मेनू ऑप्शन हमको कहाँ पे दिख रहा है, टॉप में दिख रहा है। हमको लगता है कि वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉप की जगह हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे साइड में, दैट्स ऑल। ओके, क्लिक कीजिए तो देखिए ये सब ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए और इसमें यहाँ पे आ गए। आप रिव्यू करके देख सकते हैं। मतलब लैपटॉप यूजर को भी कैसे दिख रहा है अभी, मोबाइल यूजर समान। ओके, नाउ हमने पब्लिश किया, हाँ एक मिनट, हमने पब्लिश किया और हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट का बताया था आपको। टेबल ऑफ कंटेंट का देखिए, अब यहाँ पे मुझे चैप्टर 3 नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली चैप्टर 3 पे क्लिक करूंगा। कैन नॉट, सॉरी, ये कहाँ पे दिखेगा मुझे, पब्लिश वाले में दिखेगा। मैंने पब्लिश वाला लिंक नहीं ओपन किया, मैं अभी भी कहाँ पे हूँ, मेरे इसमें हूँ। एक मिनट एक मिनट, देखिए ये मेरी कॉपी लिंक है। मैं इसको कॉपी क्या कर रहा हूँ, लिंक को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी लिंक।
और मैं इसको न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, न्यू टैब में जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये लिंक कैसी एक्टिव हो गई। यहाँ पे पब्लिश वेबसाइट में ही क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट की लिंक एक्टिव रहेगी। टेबल 2 पे जैसे क्लिक करूंगा वो डायरेक्टली टेबल 2 पे आएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, चैप्टर 3 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, चैप्टर 3 पे अपने आप आ जाएगा। क्लियर हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। लिंक एक्टिव कब रहेगी, जब आपका वेबसाइट जो पब्लिश रहेगा उसी के ऊपर, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो नहीं। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे हम काम कर रहे थे इस वेबसाइट पे, तो ये पब्लिश नहीं हुआ है। ओके, पब्लिश वाले वेबसाइट पे ही टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहता है, एक्टिव रहता है। नेक्स्ट पार्ट, नेविगेशन देखा हमने। उसके बाद यहाँ पे एक है अनाउंसमेंट बैनर। अनाउंसमेंट बैनर, तो अनाउंसमेंट बैनर में सपोज आपको बताना है कि कल कॉलेज को छुट्टी है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो tomorrow there is a holiday। लेट्स सी कैसे दिखेगा ये आपके कहाँ दिख रहा है, जिस पेज पे है वहीं पे दिख रहा है, देखिए, या किसी सभी जगह दिख रहा है। मैं फिर से एक बार चेंज करता हूँ, बोर्ड साइड की जगह टॉप कर देता हूँ। मैं होम पेज पे आ रहा हूँ, तभी मुझे क्या दिख रहा है, अनाउंसमेंट दिख रही है। मैं किसी भी पेज पे रहूँ मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे, अनाउंसमेंट। तो ये कैसे पॉसिबल है अनाउंसमेंट है ना, ये सब सेटिंग ऑप्शन में, सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे अनाउंसमेंट बैनर है। तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, जो भी आपको मैसेज देना है तो वो कहाँ पे होगा, फ्लैश होते रहेगा। तो कहाँ पे दिखाना है आपको, ऑल पेजेस पे दिखाना है कि खाली होम पेज पे, वो भी ऑप्शन है आपके पास। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ दिखा रहा है वो, ऑल पेजेस पे। अगर आपको लगता होगा खाली होम पेज पे, तो यहाँ पे सिंपली होम पेज पे क्लिक कीजिए, दैट्स ऑल। अब चेक कर लीजिए फिर से एक बार, प्रीव्यू कर रहे हैं हम। तो होम पेज पे आ गए, होम पेज पे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ मैसेज टुमारो देयर इज अ हॉलीडे। ओके, बाकी किसी भी पेज पे जाएंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा। ओके, लेकिन जो फुटर है वो हमको हर पेज पे दिखेगा। देखिए फुटर है हमारा, फुटर हमको हर पेज पे दिखेगा। क्लियर? So this is what all from my side. Now if you have any doubts you can ask me one by one. We are almost at the end. फिर से देखिए, हमने जो भी चेंजेस किए वो फिर से पब्लिश नहीं हुए, तो हमको फिर से एक बार रिपब्लिश कर लेते हैं, रिव्यू चेंजेस। तो मुझे बताएगा कहाँ कहाँ चेंजेस किए। हमने क्या किए, एडेड ऑटोमेट अनाउंसमेंट बैनर किए और एक अपडेटेड होम पेज किए। तो इसको पब्लिश करना है क्या, यस पब्लिश करो। क्लियर? नाउ इफ यू एनी डाउट्स वन बाय वन यू कैन आस्क मी। Sir, are there any legal issues associated with the personal website? Pardon, are you? Are there any legal issues associated with the with having personal website? No issue at all. Why there should be issue? I mean, it will be like only thing is that you should not use any kind of copy content in your website. okay. Okay. Yes. And if you are using someone else content, don't forget to give the citation. That's all. Yes, fine, sir. Okay, thank you. Yes, any more? सर मेरा एक क्वेश्चन। Yes, sir. Please continue. जी सर, सर इसका एड्रेस क्या होगा? जैसे अभी हम कर रहे हैं तो sites.google.com, तो यही एड्रेस होगा इसका? नहीं, ये देखिए कॉपी लिंक दिख रही है यहाँ पे आपको। जी सर। बस इसको कॉपी कर रहे हैं हम, बस यही आपकी लिंक है। मतलब किसी के भी साथ आपको शेयर करना है तो इसी को आप शेयर करेंगे। हाँ ठीक सर। देखिए मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में। ठीक है, तो क्या आ रहा है, साइट google.com व्यू यूजीसी एचआरडीसी औरंगाबाद। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी वेबसाइट की पूरी एड्रेस। क्लियर? क्योंकि हमने परचेस नहीं किया, प्लीज रिमेंबर हमने परचेस नहीं किया ये। अगर हम परचेस करते तो हम यहाँ पे साइट google.com नहीं आएगा। आप इसको दूसरे मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसकी लिंक का नाम भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए भी कुछ टूल्स अवेलेबल है, उसके लिए भी टूल्स अवेलेबल है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लिंक का, हाँ प्लीज म्यूट। आप क्या कर सकते हो, लिंक को चेंज कर सकते हो। उसके लिए भी कुछ टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप लिंक को चेंज कर सकते हो, मतलब किसी को मालूम भी नहीं हो कि हमने कैसे बनाया है। क्लियर? यस सर। यस, प्लीज एनी मोर?
Any So, doubt for any participant? yes, sir. Sir, I want to ask, sir, you said it, no? You just showed us, like, before we publish uh, or do that, there is a permission that some search engines will, I mean, if we click a tick mark over it, Yes, yes, yes. so, Yes. Continue, madam. आपको जब so क्लिक can कर you just repeat for that, will not be available? Hello. ओके राइट नाउ, जैसे मैं पहले भी कहा था कि वो एक ही बार आएगा ऑप्शन, बार बार तो आएगा नहीं। देखिए वहां पे That's okay, sir. That's नहीं okay. नहीं, That's okay. नो नो नो, आई एम एक्सप्लेनिंग। चेक बॉक्स पे जब आप क्लिक कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। मतलब प्राइवेट लोगों में आप क्या कर रहे हो, उनको साथ, उनके साथ आप लिंक शेयर करेंगे और वही आपको वो आपके वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। ओके Okay, जब आप, okay. और अदरवाइज अगर आप क्लिक नहीं करते, इसका मतलब क्या हो गया, पब्लिक डोमेन में है तो कोई भी आपके वेबसाइट को सर्च इंजन के थ्रू सर्च करके आपके वेबसाइट पे जा सकता है। Okay, okay, sir. Okay, sir. थैंक यू। यस, एनी मोर? Sir, also I was thinking that this is very useful for professors because they can put their publications and all that यस यस यस, information. डेफिनेटली But मैडम, as a डेफिनेटली। young professors, how can we make our website for a beginner or a initial early researchers? हाँ, यस, दैट Uh, दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन ना, फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, आपको क्या करना है, अपना खुद का वेबसाइट इसी तरह से बना सकते हैं आप। okay, okay. ओके, इसी तरह Yeah. से आप बना सकते हो अपना वेबसाइट। Okay, okay. ओके, एनी मोर प्लीज? Sir, will it be valid for I mean, longer time? I mean, how much lifespan it will have, sir? There is no I such a mean, limit. There is no such limit as long as you are not going to complete your 15 GB of quota. yeah, yeah, yeah. Okay, fine. Yes, any more? So it was a very helpful session. Thank you Thank you madam. for clearing our doubts and everything. Thank you very much. Any doubt? Sir, is there any Or business, I mean, perspective of this? I mean, like the views, like, I mean, the number of contacts on that basis. Number of views that you have. Yes, yes. I would like to tell you one more thing. Okay, just a moment, just a moment. Okay, one thing. I have ignored. मतलब सवाल ये आता है कि see what I expected, मतलब what I assume here is that none of you are aware about the computer. But what if some people are very much have a expertise in computer, what they can do with this Google site? Okay, so for them there is an option called as embed. Okay, there is an option called as embed, and they are able to write a coding for that purpose, whatever the coding that they would like to have. Okay, for example, embed option, and here he can write a HTML code. HTML की जो भी कोडिंग होगी वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, for that purpose you should have a basic knowledge about the coding. Hello, for example, I have written simply this one. Let's see what's going to happen. Okay, I will do one thing once again. And I have added here hello message. That's all. I can create my own coding. यहाँ पे embed के through हम क्या करते हैं, HTML. Those people who have a knowledge about the computer, they can write a proper coding. क्यों बनाना है, मतलब स्क्रीन कंटिन्यूसली ऐसे घूमते रहे हैं. So all those things is very much possible by means of this embed option. So this option is only for those people who have a knowledge about the HTML. So they can write a proper coding and they can accomplish, which is not possible by means of all these elements, which is not possible by means of what all other elements. Okay, so they can do it from using their coding. Is that clear to all of you now? What is the use of this embed? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, any more. Thank you, sir, for asking this particular question. Thank you, sir. any question? Okay. Shall I proceed for the vote of thanks then? If no one having any question. ये सभी सर, सभी की वीडियो ऑफ ही रहती है क्या?
Okay, thank you. So that I can have one snap of with all of you. Please. So shall I proceed for vote of thanks? Yes, sir, please. No issue. Continue. Please. If it is possible, This is make roll sure your video is on. That's all, nothing else from my side. Yeah, sure. Please, everyone. And all of you, I have already shared my PPT with the organizer, and definitely they will share with you. No issue at all. Yes. Thank you, sir. sir. Thank you. So this is roll number 5. On behalf of UGC MMTTC, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, I am very much thankful to Dr. Kishor sir for imparting his very valuable knowledge on the topic integrating all teaching material in e-resources and creating websites. Sir, this knowledge is very useful and very valuable for us, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Okay. So with your kind permission, I will leave. Is it okay, sir? Yes, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Gaurav, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir.